Justice is the first virtue of social institutions. With this powerful thought by Martin Luther King Jr., a very warm and dignified morning to everyone present here. As a proud member of the Legal Aid and Social Service Committee HNLU, it is both my honor and privilege to extend a heartfelt welcome to our esteemed dignitary on the dais, distinguished experts, honored guests, respected faculty members and dear participants to the Conference on Justice Delivery Mechanism and Institutional Capacity, hosted by Center for Criminal Jurisprudence and Center for Human Rights, Hidayatullah National Law University, Raipur, in the esteemed collaboration with the India Justice Report and the Center for Social Justice. This joint initiative symbolizes a shared commitment towards strengthening justice institutions and enhancing legal accessibility across the nation. I now invite respected Registrar Sir and Dean UG Law, Dr. Deepak Kumar Srivastava, who has always been instrumental in giving his unwavering support in every event of the university, to kindly come forward and deliver the welcome address. Please, sir. Good morning, everyone. Namaskar. Justice becomes meaningful not at the moment of its promise, but at the moment of its delivery, through institutions that are accessible, efficient, and trusted. Respected Chief Guest, Professor Dr. V.C. Vivekanandan, Honorable Vice Chancellor, Hidayatullah National University, Raipur, Ms. Nupur, Managing Trustee, Center for Social Justice, Mr. Valay Singh, Lead, India Justice Report, Dr. Komadi Challa and Dr. Kiran Kori, faculty colleagues and coordinators of the conference, esteemed panelists, faculty members, participants, ladies and gentlemen. On behalf of Hidayatullah National University, Raipur, it is my privilege to extend a very warm welcome to all of you to the Conference on Justice Delivery Mechanisms and Institutional Capacity. This conference is jointly organized by the Center for Criminal Law and Jurisprudence and Center for Law and Human Rights of HNLU in collaboration with the Center for Social Justice and the India Justice Report. Such institutional collaborations reflect our shared commitment to strengthening justice delivery systems through research-driven dialogue and meaningful engagement. The conference aimed to foster collective learning and to evolve actionable recommendations that may reform processes in Chhattisgarh while also contributing to the broader national discourse on access to justice. In this context, the presence of distinguished persons from academia, civil society, and research institutions adds immense value to our deliberations. We are deeply honored by the gracious presence of our respected Vice Chancellor as a chief guest of this particular inaugural ceremony, Professor Dr. V.C. Vivekanandan sir, Honorable Vice Chancellor of Hidayatullah University, whose leadership and vision continue to guide not only academic excellence but also the meaningful engagement of law universities in the effective implementation of legal and constitutional values. In this regard, HNLU has consistently remained a point. I welcome you, sir. I also take this solemn opportunity to extend a warm and respectable welcome to Mr. Valay Singh, Lead India Justice Report, and Ms. Nupur, Managing Trustee, Center for Social Justice, our esteemed collaborating partners whose presence and engagement greatly enrich this conference. We are grateful to them for their continued collaboration and valuable support. We welcome you to HNLU. I extend our special appreciation to conference coordinator Dr. Komadi Challa and Dr. Kiran Kori for their dedicated efforts in organizing this conference. We are confident that the deliberation of this conference will be meaningful, insightful, and outcome-oriented, adding
tangible value to policy, institution, and society at large. Once again, I extend a heartfelt welcome to all dignitaries, speakers, and participants. We sincerely thank you for your presence and wish you an enriching and successful conference. Thank you so much. Thank you, sir. I now request, Ms. Sarab Lamba from India Justice Report to felicitate our Vice Chancellor, sir, and welcome him. I request Dr. Deepak Kumar Srivastava, Registrar HNLU, to felicitate Ms. Nupur, Managing Trustee for Center for Social Justice. I request Dr. Kaumudi Challa, Associate Professor HNLU, to felicitate Mr. Valay Singh, Lead India Justice Report. Thank you all. I now request Dr. Kaumudi Challa, Associate Professor HNLU, to present a brief overview of the vision, theme and agenda for this conference before this esteemed gathering. Please, ma'am. A very good morning to all of you present here. Distinguished dignitaries on the dais, Professor Dr. V.C. Vivekanandan, Honorable Vice Chancellor, Hidayatullah National Law University, Dr. Deepak Kumar Srivastava, Registrar HNLU, Ms. Nupur, Managing Trustee, Center for Social Justice, Mr. Valay Singh, Lead India Justice Report, esteemed deans and faculty of HNLU, distinguished dignitaries who are present in this gathering, members from the CSJ and IJR, media personnel, and participants from across the country. It gives me immense pleasure to present here a brief overview of this conference on justice delivery mechanisms and institutional capacity being organized by Hidayatullah National Law University, Raipur, Center for Criminal Law and Jurisprudence, and the Center for Law and Human Rights in collaboration with Center for Social Justice and India Justice Report. It was said by George Washington that the administration of justice is the firmest pillar of the administration, and the four pillars, that is police, judiciary, legal aid and prison, play a pivotal role in making possible this administration of justice and realizing the vision of justice for all. This conference will therefore deliberate on the various issues which are relating to the access to justice and the role of the state and the different stakeholders in providing access to justice. This conference is having 3 panel discussions, each of which is graced by eminent experts in the field. The panel discussion 1, the theme is Building Justice Capacity in Chhattisgarh, Dialogue on Judiciary and Legal Aid. Panel discussion 2, the theme is Policing for People. And panel discussion 3, the theme is Justice Capacity in Chhattisgarh Prisons. This conference will also deliberate upon 2 major reports, the India Justice Report, 4th edition by IJR, and assessing the effectiveness of justice delivery mechanisms in ensuring access to justice report by CSJ. The objective of this conference is to initiate collective learning and to propose some pragmatic solutions for reforms in the state of Chhattisgarh with respect to access to justice and with respect to the institutional mechanisms which are related to justice.
I welcome you all to this conference and hope that all these discussions and deliberations would result in fruitful recommendations to ensure accessibility of justice. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for setting a thoughtful foundation for today's discussion. May I now request our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. V.C. Vivekanandan, to formally release the report assessing the effectiveness of justice delivery mechanism in ensuring access to justice by the Center for Social Justice. I further request all the dignitaries on the dais to join him for the release. Thank you all. We are privileged to have Ms. Nupur, Managing Trustee of Center for Social Justice, with us today. Ms. Nupur is a law graduate for India's prestigious legal institution, National Law School of India, University, Bangalore. She is serving as Managing Trustee for the Center for Social Justice, where she has been actively involved in access to justice and human rights work. She has helped to extend legal awareness, legal representation, and institutional reforms to support the socially vulnerable groups. I request her to come forward and present an overview of the report titled Assessing the Effectiveness of Justice Delivery Mechanism in Ensuring Access to Justice. Please, ma'am. जिंदाबाद साथियों, बहुत संक्षिप्त में बता देती हूँ। शुरुआत में मंच के ऊपर सबका स्वागत किया गया और कॉन्फ्रेंस का हेतु क्या है उस दृष्टिकोण से बातचीत की गई कि न्याय की पहुँच से संबंधित जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों से संबंधित जो भी बदलाव की ज़रूरत है उसके ऊपर आपका सबका जो अनुभव रहा है और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके जो अनुभव रहे हैं उसको कैसे एक मंच पर ला करके हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ये थोड़ी सी चर्चा की गई। HNLU के साथ में हमारा अनुभव जो है उसमें से बहुत से साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बच्चे अब नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने माइग्रेंट्स के साथ में जो काम किया था, आप में से बहुत से साथी उसमें जुड़े हुए थे। आज उस जगह पे भी हम आए हैं जिन बच्चों के साथ में हमने काम किया था, तो वो हम सबके लिए भी एक बड़ा खुशी का मौका है। थोड़ा सा मैं बहुत संक्षिप्त में रिपोर्ट के बारे में बता देती हूँ। रिपोर्ट का डेटा जो यूज़ हुआ है वो शायद थोड़ा पुराना है, लेकिन मैं नवंबर अभी गए महीने में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैं देख रही थी कि हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं या हमने जो भी बातचीत की है या हमारे जो भी सुझाव हैं वो सभी उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वरिष्ठ अधिकारी प्रेजेंट थे उन सभी मुद्दों की और उन सब रिकमेंडेशंस की बातचीत हुई है। तो एक लंबा प्रयास रहा है हमारा जहां हम लोगों ने बार बार कुछ बातें कही हैं, लेकिन अब ये माहौल ऐसा बन रहा है कि बदलाव के लिए बातचीत इवन ड्यूटी बेरर्स के बीच में ये बातचीत हो रही है। उस संदर्भ में थोड़ा सा रिपोर्ट की बात कर देती हूँ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कुछ चीज़ों को देखती है और उसको कॉम्प्लीमेंट करती हुई हमारी रिपोर्ट है जो बिल्कुल माइन्यूट एकदम तालुका और जिला स्तर पे क्या परिस्थिति है उसको देखती है। तो हमने तीन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा है। जो अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी है उसकी फंक्शनिंग कैसी है उस बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की है। जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की है और जो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे उससे जुड़े हुए जो भी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी है जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर्स का आ गया या रिटेनर लॉयर्स का आ गया या पैनल लॉयर्स का आ गया,
वो उसमें कहाँ कहाँ पे चीज़ें सुधर रही हैं, कहाँ कहाँ पे और सुधार की ज़रूरत है, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी बातचीत की है। जो हमने मेथडोलॉजी यूज़ की है वो आपके सबके अनुभव रहे हैं, जो अलग अलग सेमिनार्स में हम लोग आपके साथ में जुड़ करके निकालते रहते हैं। कुछ वकील जो इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं उनके साथ के इंटरव्यूज़ रहे हैं, विक्टिम्स के साथ के इंटरव्यूज़ रहे हैं, और कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ के इंटरव्यूज़ रहे हैं, और हार्डकोर RTI डेटा रहा है जिसके बेसिस पे हमने ये रिपोर्ट निकाली है। दो ही मुख्य उद्देश्य हैं इस रिपोर्ट के। पहला ये है कि हमारा लीगल एड सिस्टम और काफ़ी बेहतर है, लेकिन और बेहतर कैसे हो सकता है, उसके ऊपर ग्राउंड से क्या आवाज़ें निकल कर के आ रही हैं, हमारे अनुभव क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे हमें बदलाव की ज़रूरत है। और दूसरा कि लीगल एड सिस्टम के साथ में जुड़े हुए बहुत से कोलैबोरेटर्स हैं, उसमें पुलिस तंत्र भी आ जाता है, उसमें जुडिशरी भी आ जाती है, उसमें सरकारी डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं। तो उन सब के आपस में कोलैबोरेशन के क्या क्या स्पेसेस हैं जिनको और मजबूताई से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, तो उनको और मजबूताई से कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी बातचीत की गई है। पहला चैप्टर जो हमारा है वो लीगल एड फॉर द पुअर की बात करता है, जिसमें पूरा एक सिस्टम है, जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर स्कीम है 2009 की, 2011 का लीगल क्लिनिक सिस्टम है। इस पूरे सबको देखते हुए कहाँ कहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है उसकी बातचीत की है। दूसरा जो अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी है उसमें लार्जली जो समझ में आ रहा है कि लार्जली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ कागजी कार्रवाई हो रही है लेकिन अल्टीमेटली जिस कैदी को छूटना चाहिए वो कैदी छूट नहीं रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा नतीजा रहा है। तो उसके उसमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि ये रिव्यू कमेटी का जो पर्पस है वो ये है कि कोई भी इंसान ज़्यादा समय तक जेल के अंदर ना रहे, तो वो लाभ उस कैदी को मिल सके, उसके संबंधित कहाँ कहाँ सिस्टमिक चेंजेस की ज़रूरत है, वो बातचीत हमने की है। और तीसरा जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है जो डालसा की मुख्य जवाबदारी रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह से डालसा पुलिस जुडिशरी का एक कॉमन समझ होनी ज़रूरी है, और किस तरह से कुछ लोग हैं जो हमारे इसमें से छूट जा रहे हैं, इन स्कीम्स में से छूट जा रहे हैं, जैसे पॉक्सो है या SC/ST POA के तहत में जिनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, या यदि कोई बच्चा है जिसकी माँ की मृत्यु उसके पिता द्वारा की गई है, तो इस तरह की, या विच हंटिंग है, तो इस तरह की यूनिक कैटेगरीज हैं जिनको विक्टिम कॉम्पनसेशन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, उनके लिए हमको किस तरह से पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत है, उस दृष्टिकोण से थोड़ी सी बातचीत की गई है। ज़्यादा विस्तार में जो पैनल सेशंस हैं उसमें हर रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, अभी के लिए केवल इतना है। थैंक यू। Thank you, ma'am, for sharing the insights and the hard work behind the report. We are fortunate to have with us Mr. Valay Singh, the lead of India Justice Report. His professional trajectory includes working as a journalist before turning to a full-time research and report work. As a project lead, he has overseen the data-driven research, coordination, and publication of successive editions of India Justice Report. May I now invite him to present the overview of the current report to our gathering. Please, sir. सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम वलय सिंह है और मैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इनफॉर्मल कलेक्टिव है। पिछले 7 सालों से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं: विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, TISS प्रयास, दक्ष और हाउ इंडिया लिव्स। इसके साथ साथ IJR भी हमारे पार्टनर हैं। हमारी अप्रोच है कि हम न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था को इस तरह से समझने की कोशिश करें, ऐसी समझ पैदा करें सब में, जिसमें कि पहली चीज़ कि हम उसे एक साइलो या एक अलग अलग करके ना देखें। सिस्टम वैसे नहीं चलते हैं।
और इससे ज़्यादा मैं आगे बात बढ़ाऊँ उसके पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर विवेकानंदन का, जिन्होंने हमको ये फोरम दिया यहाँ पर आके अपनी बात रखने के लिए, प्रोफेसर दीपक कुमार का, जिन्होंने हमको इतने अच्छे से यहाँ से हमको सारी कोऑपरेशन दे रहे हैं, श्री पार्थ तिवारी जो SLSA से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर उपनीत लाली जो चंडीगढ़ से आई हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन दैट वर्क्स विद प्रिजन्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स, and Mr. Vipul Mudgal from Common Cause, the Executive Director of Common Cause, who's also come from Delhi and who will be speaking in the later sessions. Dr. Komadi, Dr. Rajput and all the colleagues of HNLU, I want to thank you at the outset before I proceed further. So, as I was saying, कि justice system के 4 core स्तंभ मान सकते हैं हम, पुलिस है, विधिक सहायता है, कोर्ट्स हैं और जेलें हैं। जस्टिस रिपोर्ट में एक और पहलू पे हम लोग काम करते हैं जो है राज्य मानव अधिकार आयोग या SHRCs। इन सभी के जब हम इनका एनालिसिस करते हैं, आकलन करते हैं, तो हम एक क्षमता का लेंस या कैपेसिटी के लेंस से करते हैं। परफॉर्मेंस के लेंस पे बहुत सारी कमेंट्री, एनालिसिस, क्रिटिक होता रहता है, लगातार होता रहता है, और जो CSJ की रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं उसकी गुणात्मक या क्वालिटेटिव पहलुओं पे बात कर रही है। हमने ऐसे डिसाइड करा है कि हम देखेंगे कि क्या क्षमता है सिस्टम में अपने मैंडेट को मीट करने की। उससे ये हमें समझ में आता है कि हम अक्सर किसी अधिकारी तक ही जवाबदेही तय करते हुए रुक जाते हैं। हमको अधिकारी से भी आगे जाना पड़ेगा और हमें उसके सिस्टम की क्षमता की जब हम बात करेंगे तब हम उसकी जवाबदेही सही मायनों में तय कर पाएंगे। और सिस्टम हमारी चुनी हुई सरकारें चलाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमें सिर्फ अपने से जिसका पल्ला पड़ता है उस अधिकारी तक नहीं रुकना चाहिए अपनी समझ या सोच को। हमें इसको एक ढांचे की तरह और उसकी ढांचागत एनालिसिस करना चाहिए। ये हमारा पूरा प्रयास है। और दूसरी चीज़ हम लोग बहुत ध्यान से करते हैं वो ये कि हम सरकारी आंकड़े ही यूज़ करते हैं जो सरकारें खुद रिपोर्ट करती हैं किसी केंद्रीय संस्था को या अदरवाइज पब्लिक में, और हम सरकारी मानकों को या स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं, हर स्टेट के अपने मानकों को, और हम इससे ये इंश्योर करते हैं कि एक तरह का एक फेयरनेस है। हम किसी को गलत तरीके से एक दूसरे से तुलना या कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम उनको उनसे ही कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से। ऑफ कोर्स इस सारी कम से कम 100 हमारे मैट्रिक्स हैं, उनको समझाने के लिए हमने एक रैंकिंग के टूल का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को, खासकर हमारे मीडिया के साथियों को और उनके ज़रिए आम पब्लिक को ये सिस्टम समझ में आए। तो अगर आप रैंक करते हैं तो लोगों को सिंपल समझ में आता है कि कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, कौन सी अच्छा कर सकती है, कौन सी और अच्छा कर सकती है। तो ये सब हमारी अप्रोच है। और कुछ ब्रॉड थीम्स हैं या कह लीजिए रिपोर्ट के अंदर कुछ पहलू हैं जिस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि विविधता क्या है या डाइवर्सिटी, महिलाओं की भागीदारी क्या है। अगले सेशंस में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन एक मिसाल के तौर पे महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के DLSA सेक्रेटरीज़ की प्रतिशत महिलाओं की करीब 45% है, जो कि देश में काफ़ी ऊंची है। उसी तरह लोअर जुडिशरी में भी छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भागीदारी अच्छी है। दूसरी भी भागीदारियां होती हैं, जैसे कि जाति और जनजाति समूहों का क्या प्रतिनिधित्व है, उनका क्या शेयर है इन सारी सर्विसेज। इसके अलावा हम लोग देखते हैं वर्कलोड, कार्यभार कितना है, और उसी के साथ साथ मानव संसाधन कितने हैं, बजट्स कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। और एक साल पे, जब आप लोग भी कई सिविल सोसाइटी से होंगे, रिसर्चर्स हैं, एक साल का डेटा लेके हम लोग किसी बहुत अच्छे परिणाम पे नहीं पहुंच सकते। तो किसी भी रिसर्च में आप एक साल का लीजिए, पर फिर उसको आप 5 साल के ऊपर भी देखिए, और फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, इस राज्य की वाकई में ये सिचुएशन है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो हम लोग स्टॉक इंडिकेटर्स भी लेते हैं और ट्रेंड इंडिकेटर्स भी लेते हैं। राज्यों को अब ज़िले में, जब आप लोग तो जानते हैं ज़िले में भी जब अलग अलग साइज़ के ज़िले होते हैं, कुछ ज़िले ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, कुछ ज़िले कम पॉपुलेटेड होते हैं, उसी तरह हमारे देश में अलग अलग तरह के राज्य हैं। तो उनके अलग अलग समूह हमने बनाए हैं
एक 18 राज्यों का समूह है जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, और एक 7 राज्यों का समूह है जिनकी 1 करोड़ से कम है, और कुछ एक अलग समूह है जहाँ पे AFSP है, वहाँ पर हमने रैंकिंग नहीं करी है, ना ही हमने केंद्र शासित प्रदेशों या की यूनियन टेरिटरीज को हमने रैंक नहीं किया है। तो रैंकिंग आप सबको रिपोर्ट मिल जाएगी, आप खुद देख सकते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि देश के जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की लगातार चौथी रैंकिंग में भी ऑन एवरेज बेटर परफॉर्म करते हैं। किसी भी आप उस पर मानक ले लीजिए, और इसमें कोई ये बहुत बड़ी वो खोज नहीं करी है हमने। इन जनरल सदर्न स्टेट्स डू बेटर ऑन मोस्ट metrics, and there is a reason for it, and we all need to understand that reason and then try to think how we can improve our own state, which is maybe a couple of decades if not more behind the southern states. But in general, southern states tend to do better. Speaking of Chhattisgarh appears somewhere in the middle ranks. In fact, this year's rank has been the best so far. So being a new state, नए राज्य होने के फ़ायदे हैं, और ऐसा लगता है इस क्षमता और ढांचागत क्षमता वाली रैंकिंग में कि छत्तीसगढ़ अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहे हैं एज अ स्टेट। मध्य प्रदेश को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ अच्छा कर रहे हैं, जो कि पहले एक ही राज्य था, जैसे कि कई बहुत ही यंग लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की रैंक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसमें सबसे आखिरी वाला कॉलम लेटेस्ट रैंक दे रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे कि शायद जेलों में सुधार की और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। उसके बारे में डॉक्टर लाली और हमारे जो जेल विभाग से साथी आएंगे वो बात करेंगे। लेकिन बाकी सारे स्तंभों में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ इज़ इन द टॉप 10। इट इज़ नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट. It does show that the state has the resources and that the state is putting its resources in at least providing that access to justice. न्याय तक पहुंचने की क्षमता के लिए तो स्टेट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि क्षमता की क्वालिटी में नेसेसरीली कुछ ना कुछ बात करने लायक पहलू होते ही हैं, जो कि हम लोग बात करेंगे आगे जाके उस बारे में। लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ओवरऑल बात करें हिंदी भाषी प्रदेशों में कई प्रदेशों से अच्छा कर रहा है छत्तीसगढ़। और अब चूंकि हम लोग एक मिक्स ग्रुप हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा काम एज रिसर्चर सिविल सोसाइटी दोनों तरफ का होता है। प्रॉब्लम कहाँ है वो बताइए, और ये भी बताइए कि इम्प्रूवमेंट कहाँ हो रहा है। तब आपकी रिपोर्ट एक तरह से बैलेंस, कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक बनेगी। तो हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को शोकेस करें। तो हम ये इम्प्रूवमेंट स्कोर कार्ड है आपकी स्क्रीन पे, इसमें बेसिकली 68 मेट्रिक्स आउट ऑफ 102 में किस स्टेट ने कितना सुधार करा है। तो अब आप देखेंगे कि वहाँ पे तो जैसे कर्नाटक ने टॉप करा है, उसके बाद और सदर्न स्टेट्स हैं। लेकिन इस इम्प्रूवमेंट स्कोर कार्ड में आप देख रहे हैं कि एक्चुअली वो बिहार है जो सबसे ज़्यादा सुधार कर रहा है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर राजस्थान है, फिर कर्नाटक, केरला, पंजाब, और जो सबसे नीचे के 2-4 राज्य हैं उनके नाम ले लेता हूँ मैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। अब तमिलनाडु ऑलरेडी इधर है तो वो उसके बाद इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप भी उतना कम है। लेकिन मोटी बात यह है कि इम्प्रूवमेंट स्कोर कार्ड आपको दिखाता है कि आप हो सकता है रैंकिंग में अभी नीचे हैं, लेकिन सुधार करने के प्रयासों में आप काफ़ी ऊपर हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ की रैंकिंग भी लगातार इम्प्रूव हुई है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, शायद 10 मिनट होने वाले हैं। एक हमारी जस्टिस रिपोर्ट के अलावा हम लोग अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की हम शोध करें जो कि सभी को ये एम्पावरमेंट दे, शक्ति दे कि वो अपने पहलुओं पे, अपने रिसर्च इंटरेस्ट पे बात कर पाएँ। तो किशोर जो बच्चे होते हैं 18 से कम साल के, वो मान लीजिए उनसे कोई क्राइम हो गया या उन पर चार्ज है कि उन्होंने क्राइम करा, उनके बारे में हमने एक नई रिपोर्ट निकाली है अभी हाल ही में 24 नवंबर को। वो रिपोर्ट पीली कलर की है, बाहर रखी है, शायद उसकी हिंदी कॉपीज़ भी हैं।
हम लोग हर रिपोर्ट को 6 भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी में खासकर पूरी हर रिपोर्ट पूरी तरह ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को सही में समझना है तो ये पता करो कि पैसे कितने लगे। तो हम लोग बजट्स पे बहुत स्टडी करते हैं, बहुत ही पेनफुल काम है। 26 राज्यों के बजट डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, 4 विभागों के, खुद मैनुअली पढ़ते हैं। AI यहाँ पे नहीं आ पाया है और अभी आएगा भी नहीं कुछ दिनों तक। तो उससे ये पता चलता है कि हमने एक पायलट स्टडी निकाली है कि 11 हाई GDP स्टेट ऑफ इंडिया, द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट्स, हाउ डू दे fund the justice sector, sir? So I hope I'm also inspired by the conversation before coming here, what you were sharing about the vision of Professor Madhav Menon. And I feel that in some small way we are trying to further that mission by trying to analyze and unpack the system, by studying everything, what kind of fiscal priority is being awarded to the justice system by state governments. So that is a larger ambition to do this over a period of time and unpack the fiscal priority towards access to justice. So this report also is going to come out. And finally, for which I have a special request to HNLU Professor Vivekanandan, that हम लोग एक शहरी क्षेत्रों में न्याय सिस्टम की क्या हालत है उसको हम लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है कॉल्ड द IJR सिटीज़ प्रोजेक्ट, जिसमें हम बम्बई, बेंगलोर और रायपुर हमने चुना है। बम्बई और बेंगलोर देश के सबसे रिच शहरों में से हैं और रायपुर को हमने लिया एक नया राज्य, नई राजधानी, हाल ही में कमिश्नरेट भी अनाउंस हुई है। यहाँ पर न्याय प्रणाली शहर में कैसी होगी, कैसी होना चाहिए, इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं IJR की तरफ से आपका कोऑपरेशन सीख करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Your efforts and commitment to this noble initiative are truly appreciated. Every successful institution stands strong on the foundation of transformative leadership. At HNLU, we are truly fortunate to be guided by our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. V.C. Vivekanandan, an eminent personality in the field of law, a renowned scholar, and an inspiring leader, whose visionary guidance and unwavering dedication continues to strengthen HNLU's institutional excellence and academic advancements. Sir holds a PhD in law, intellectual property rights specifically, from National Law School of India University, Bangalore, and his subject specialization spans intellectual property laws, internet laws, cyber law. Sir is a distinguished scholar whose 3 decades of teaching, research, and academic leadership have significantly shaped legal education in India. Today we have the honor of having him as the chief guest of this ceremony. With great respect, may I now humbly invite him to kindly address the gathering and enlighten us with his wisdom and expert vision. Please, sir. Warm good morning to all of you. Ms. Nupur, Managing Trustee of Center for Social Justice, whom I knew as a very young learner in the year 1990 when I joined National Law School of India. She was one of the people dreaming about legal education, a small batch, experimental batch, which were joining at the time, and I was a rookie teacher at the time joining them. Though I have not interacted with her in person for many years, but I have been abreast of her dedicated work through my colleagues at NLS and elsewhere, and especially through late Professor Madhav Menon, who used to talk about her every time when we interact when it comes to the way NGOs are working. So I'm quite happy that she is with us today here and associating with HNLU, and I can expect
this journey to continue of our Center of Social Justice with HNLU. Mr. Valai Singh, lead of the India Justice Report, a professionally acclaimed report which reflects and introspects today's theme of justice delivery mechanism and institutional capacity. We are quite happy to associate with your report today and the way you briefed about how you people have gone, and I'm pretty sure that this will have an impact in the coming days of what we expect of our Constitution. Otherwise, distinguished participants who come here, Registrar in Charge Dr. Deepak, Program Conveners Dr. Kaumudi Challa, Dr. Parvesh Rajput, Dr. Kiran Kori, who have taken a lot of efforts to meticulously put this event to take off today, my other colleagues who have gathered here. I am honored to be here to give some of my thoughts on the theme that lies at the heart of India's constitutional promise, which is the delivery of justice as a lived reality and not as a distant ideal. More than 7 decades ago, Dr. B.R. Ambedkar reminded us that the Constitution is as good as the people who are called to work for it. This caution is perhaps most visible in the functioning of a justice delivery mechanism even today, which involves multiple institutional actors: the judiciary, the enforcement agencies, the legal aid institutions, the prison and correctional system, and I might add law schools as catalysts for this reform. So it requires a critical and constructive look at these systems, not merely as identity gaps, but to understand how they may collectively reaffirm our constitutional vision of justice, that is social, economic, and political. If I touch briefly these 4 components, which are the major part of today's event, plus having the liberty to add law schools because it's happening in a law school. So the first, the judiciary, which is the guardian of rights, but is always burdened by constraints. The Indian judiciary remains, even today, the most trusted institution in our democracy. Yet it faces structural challenges which undermines timely and effective justice. Justice Krishna Iyer often reminded us, delay of justice is injustice. Today, our courts are overburdened with more than 5 crore pending cases, a figure that reflects not the failure of a judicial will, but the mismatch between constitutional expectations and institutional capacity. The key concerns include acute shortages of judges and staff, inadequate court infrastructure, especially at the district level, procedural complexities that disproportionately affect the poor, increasing reliance on interim orders, creating adjournment cultures. The Supreme Court in Hussain-era Khatun versus State of Bihar in 1979 held that the right to speedy trial is implicit in Article 21. Yet, over 4 decades later, the gap between the principle and practice still remains very wide. Similarly, in Anita Kushaba versus Pushap Sudan, as near as 2016, the court articulated 4 essential components of access to justice, that is, adequate adjudicatory mechanisms, accessibility, affordability, and effectiveness. These continue to be aspirational benchmarks, but sadly, it is little far away in terms as benchmark. I'm reminded of one of the former chief ministers in Tamil Nadu once remarked that he said, justice is a dark room. The arguments of the lawyers illuminate the dark room. But he said, this light of the lawyers is never accessible to the poor. So this is one other thing of when we celebrate great judgments, great insights, that we are talking about access to justice, which otherwise defeats the constitutional purpose.
The second is enforcement agencies, who are the first gatekeepers of this process of justice. Policing and investigative agencies form the first institutional contact that the citizens have with the justice system. The renowned jurist Benjamin Cardoso, on whom a law school functions in the United States today, once said, "Justice is not taken by storm. She used to be wooed by slow advances." But the reality in India often feels the opposite. Investigative delays, custodial practices, lack of forensic capacity, and limited accountability mechanisms deeply affect the outcomes in the courtroom. So, persistent challenges in this front includes low police to population ratio, overburdened investigation officers, prosecution wings inadequately staffed, forensics delays leading to compromised evidence, and high reliance on confessional statements rather than scientific tools. The Supreme Court's landmark decision, again in Prakash Singh versus Union of India in 2006, sought to depoliticize and professionalize the police through structural reforms. However, the uneven implementation of these directives continues to affect the quality of investigation across the states. Of course, we brought in 3 new criminal laws. In my opinion, they are what we call the cart. But where are the horses? Or the horses inadequate to pull the cart? So sometimes we in India, legislations do have sometimes rushing where you put what you call as cart before the horses. So it is a big humongous task, and HNLU, I said that we are embarking in our modest way of training with the police department on these laws very critically. So the third component, which is part of the theme today, is legal aid and the role of state. That is upholding what is the equality mandate. Article 39A casts a constitutional duty on the state to ensure free legal aid so that justice is not denied on the grounds of economic or social disadvantage. Justice P.N. Bhagavati described legal aid as the mechanism that ensures equal justice in action, not merely in words. While NALSA and NLSAs have made commendable progress, several gaps still persist. Mainly, lack of trained and motivated legal aid lawyers, minimal monitoring of quality of representation, inadequate awareness among beneficiaries, limited integration of legal aid with social welfare schemes, and dependence of Lok Adalats for volume disposal rather than justice-centric outcomes. The Hussainara Khatun series is once again reminding us that access to lawyers for under trials is not a matter of charity, but it is a matter of constitutional guarantee. And again, I would like to underline that we'll be soon embarking on a project with a major foundation in Bangalore in order to support in different districts the legal aid process, because when they came down mapping what is Chhattisgarh and what HNLU could do, we did say that quite a good amount of HNLU graduates are working in districts, and they will be partnering if we get some kind of scheme going. And shortly we will be announcing that where this area we can do our bit as part of the efforts what the two dignitaries here are doing. And the fourth one of the theme is prisons and correctional institutions. The question is from punitive to reformative justice. Prisons are often described as the dark corners of the justice system. They are overcrowded, under-resourced, and frequently violative of the rights of under-trials, who constitute, which is 75% of the prison population are under trials. That is alarming. Only 25% are convicted. 75% are under trials. So Justice A.N. Mullah once stated memorably, there is a criminal in every man and there is a man in every criminal. And this is a quote to be remembered when we are really talking towards reformative justice than criminalizing. The transformation premise is often missing
in policy and practice. The crucial issues of gaps which one might point out is, again, overcrowding and understaffing, mental health concerns and lack of counseling, inadequate vocational and educational facilities, poor connectivity between prisons, courts and legal aid authorities, and infrequent use of parole, remission and technology-enabled reforms. The Supreme Court in Sunil Batra versus Delhi administration, again in 1978, expanded the ambit of Article 21 into the prison walls, holding that prisoners do not shed fundamental rights except those necessary entailed by law. Yet even today, prison conditions remain an unaddressed frontier of judicial reform. The last which I added to our theme, I took the liberty to add, is the missing link, the law schools as the intellectual and social interface. Perhaps most underutilized institutional stakeholder in the justice system is the law university, and whether it can do it from law school, the living example is Ms. Nupur, right from law school, right? So every constitutional transformation we aspire, from police reform to prisoners' rights, from legal aid to access to justice, requires three things that the law schools are uniquely equipped to provide. Number one, knowledge generation and evidence-based research. Second, training of socially conscious legal professionals. And third is clinical engagement with the communities. Dean Roscoe Pound once famously called law as a profession of public service and social trusteeship, is the quote what he said. So law schools can play a crucial interface role by strengthening legal clinics and village adoption programs, partnering with legal aid authorities and trial courts, conducting empirical studies on delay, bail, sentencing and prison conditions, supporting digitization and legal literacy initiatives, developing specialized research hubs in police reform, judicial administration and correctional studies, creating an ecosystem for public policy research and impact litigation. Also, embedding ethics, empathy, and constitutional values in their pedagogy. In the state of Maharashtra versus Manubai Pragaji Vashi in 1995, the Supreme Court recognized the importance of legal education as a component of access to justice. This remains an under-leveraged jurisprudential foundation of deeper collaboration between the justice system and academia. In India, to meaningfully realize the promise of Article 21, Article 39A, and the transformative intent of the preamble, law schools must move from being passive observers to active institutional partners. And I think this is one of the things what we are doing is a kind of a start to be active institutional partners with the two NGOs which have come together today to disseminate things. So if I look at what is the path forward, a justice system is not the sum of independent institutions. It is a coordinated ecosystem. Strengthening one component while neglecting another leads to a systemic imbalance. So we need to focus on institutional synergy. I consider that as which the theme here very aptly has been done, and deliberations are going to happen throughout the day. That is judiciary, police, prosecution, prisons and legal aid. And technology enablement in a relevant manner, e-courts, digital evidence system and other technology infusing things in case management, capacity building, continuous training for police, prosecutors and prison officers, infrastructure investment and what could be done in terms of courts, forensic labs and policy coherence, that is harmonizing state and central reforms, and community partnership where law schools, NGOs and universities as allies in reform. So Justice Holmes once remarked, the life of law has not been logic, it has been experience. The life of law is not logic but has been experience.
India's experience teaches us that justice cannot be delivered by judiciary alone. It requires a whole system approach grounded in constitutional morality, administrative efficiency, and human dignity. So, as we stand 75 years after adopting our constitution, it is worth recalling Justice D.Y. Chandrachud once articulated that constitutional rights must be realized not in rarefied courtrooms alone, but the lived realities of ordinary citizens. So the challenge is at least twofold, if I summarize: to strengthen institutional capacity and to deepen the moral commitment of every stakeholder in the Constitution vision of justice. As if the judiciary is the guardian, enforcement is the first responder, legal aid is the equalizer, prisons the site of humane reform, and law schools will be the crucible where future custodians of justice are shaped. Then together they can give life to the words which our Constitution begins, famously, "We the people of India." So let us resolve the justice system we build will be one where citizens feel, oh, no more citizen is feeling unseen, unheard, or unprotected. A system where justice is not delayed, not denied, and not confined to the privileged few. A system worthy of constitutional promise entrusted to us, and that will be the realization of the Constitution of India. Thank you very much. Thank you very much, sir, for sharing your wisdom and expert insights with us. Your words have truly enriched this opening ceremony. The floor is now open to reflections and lived experiences. I now invite Advocate Divya Jaiswal, Advocate Gayatri Suman, and Advocate Shobharam Gilhare to voice their views, experiences, and observations in relation to the justice delivery system. आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य नागरिक, सबको मेरा अभिवादन। आई एम दिव्या जायसवाल, एडवोकेट फ्रॉम बिलासपुर एंड द मेंबर ऑफ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस संस्था अहमदाबाद बेस्ड है। पिछले 33 वर्षों से हम पूरे देश के कई राज्यों में काम कर रहे हैं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस छत्तीसगढ़ में कानूनी मार्गदर्शन केंद्र के नाम से स्थापित है। कानूनी मार्गदर्शन केंद्र और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस हमारी संस्था का उद्देश्य है एक्सेस टू जस्टिस। हम पीड़ितों की न्याय तक की पहुंच को आसान बनाने में मदद करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में कई जिलों में काम है। हमारे सेंटर जो हैं वो 3 जिलों में हैं, रायपुर, बिलासपुर और सारंगढ़ में। हमारी संस्था के उद्देश्य के तारतम्य में हम एडवोकेसी करते हैं, लिटिगेशन, लीगल अवेयरनेस, लीगल रिसर्च और लीगल ट्रेनिंग्स करते हैं। इसी तारतम्य में हमने कुछ रिसर्च किया है, कुछ मुद्दों पर रिसर्च किया है। उसकी जो हमारी फाइंडिंग्स हैं और जो हमारे स्टेट का रिकमेंडेशंस है उसको हम आपके सामने रखेंगे। मैं यौन हिंसा एवं पॉक्सो से संबंधित जो हमारे फाइंडिंग्स हैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। फाइंडिंग्स पे पहला है, जैसा कि आप जानते हैं कि यौन हिंसा और पॉक्सो के लिए एक स्कीम बनी हुई है, वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन स्कीम। इसका क्रियान्वयन जो है उसके लिए 19 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। न्यायालय में जो संकटग्रस्त महिला है या बच्चे हैं, जितने एफटीसी कोर्ट हैं उस कोर्ट के आसपास उनके लिए एक वेटिंग रूम की व्यवस्था की बात कही गई है। कुछ जो बड़े कोर्ट्स हैं वहाँ पर वेटिंग रूम्स हैं, पर बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स भी हैं जहाँ पर वेटिंग रूम्स की व्यवस्था अभी भी नहीं है। ये वेटिंग रूम्स उन जो पीड़ित बच्चे हैं, महिलाएं हैं,
उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको आरामदायक और सुरक्षित माहौल देने के लिए होता है, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत जगह इसकी व्यवस्था है। तो हम स्टेट से अनुशंसा करते हैं कि जिन जगहों में इस तरह के वेटिंग रूम्स नहीं हैं, वहाँ पर वेटिंग रूम्स प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, इन ट्रायल कैमरा प्रोसीडिंग की जो बात है, उसमें यह है BNSS की धारा 366(2) मतलब 366(2) और पॉक्सो की धारा 37 के अनुसार बलात्कार और सभी पॉक्सो मामलों में संपूर्ण जो विचारण होता है, जो ट्रायल होता है, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो सिर्फ पीड़ित हैं उनका ही इन कैमरा ट्रायल हो रहा है। इवन हमारा अनुभव ये भी है कि बहुत सारे कोर्ट हैं जहाँ पर ओपन ट्रायल चल रहा है। तो हम स्टेट से ये अनुशंसा करते हैं कि वो सुनिश्चित किया जाए कि जो संपूर्ण ट्रायल है वो इन कैमरा हो, और पीड़ित जो है उसके चरित्र और यौन इतिहास से संबंधित जो सवाल है जिसका प्रतिबंध लगाया गया है, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। तीसरा है पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन। पॉक्सो की जो धारा है 33(2) के अनुसार जो डिफेंस काउंसिल है वो डायरेक्ट जो पीड़ित है उससे डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकता है। वो अपना सवाल न्यायालय को देता है और न्यायालय उसे उचित समझता है तो उसमें से वो सवाल पीड़ित से पूछता है। धारा 33(6) जो है 33(6) जो है वो बच्चों से आक्रामक या अपमानजनक जो सवाल है वो पूछताछ करने पर प्रतिबंध करती है। बच्चों की गरिमा की रक्षा अनिवार्य है। अधिकांश न्यायालय अभी भी डिफेंस काउंसिल को डायरेक्ट प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। इसलिए हम स्टेट से निवेदन करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि डिफेंस काउंसिल के द्वारा डायरेक्ट जो सवाल पूछा जा रहा है उस प्रतिबंध का कठोरता से पालन किया जाए। चौथा है जमानत सुनवाई में पीड़िता का सुने जाने का अधिकार। BNSS की धारा 483(2) के अनुसार नाबालिग से जुड़े बलात्कार के मामले में जमानत देने से पहले पीड़ित शिकायतकर्ता की सुनवाई अनिवार्य है। नाबालिग एवं बालिग दोनों के लिए है। सभी यौन हिंसा के मामले में जमानत से पहले जो पीड़ित है उसको अपना पक्ष रखने का अनुमति दिया जाए या मौका दिया जाए, ऐसा प्रावधान है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो पॉक्सो है उसमें तो इस प्रावधान का पालन किया जा रहा है, लेकिन यदि बालिग महिला है तो किसी को नोटिस सर्व हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। तो हम स्टेट से निवेदन करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित को अनिवार्य रूप से नोटिस जाए और जमानत से पूर्व पीड़िता को सुना जाए। पांचवा है पॉक्सो सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति। पॉक्सो की धारा 39 एवं नियम 4 के अनुसार प्रत्येक मामले में योग्य एवं प्रशिक्षित सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की जानी चाहिए। सपोर्ट पर्सन बच्चों और परिवार को कानूनी व मनोवैज्ञानिक सहायता तथा पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करता है। हमारा अनुभव ये है कि हर FTC कोर्ट में पॉक्सो के तहत सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति नहीं है। 1-2 कोर्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, ऐसा हम स्टेट से अनुशंसा करते हैं। छठवां गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का अभाव। यदि MLC के दौरान पीड़िता गर्भवती पाई जाती है तो डॉक्टर को गर्भपात के अधिकार और प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देना चाहिए। इसके बजाय पीड़िता विशेषकर नाबालिग को पुलिस और अदालत जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि MTP अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकारी अस्पतालों द्वारा गर्भपात न देने से पीड़ित जो है वो मानसिक तनाव और असुरक्षित गर्भपात की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है। हम स्टेट से अनुशंसा करते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि MTP एक्ट का पालन दृढ़ता से हो। आप सबका धन्यवाद। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। मेरा नाम गायत्री सुमन है। मैं बिलासपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 17 साल से। हम जैसे दिव्या मैडम ने आप लोगों को बताया कि हम लीगल एड के ऊपर काम करते हैं और साथ में रिसर्च भी करते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन, तो हमारा ये जो रिसर्च निकल के आया है उसका डाटाबेस है RTI और हमारी जो कोर्ट के प्रैक्टिस है उसके ऊपर। तो ये कहता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उद्देश्य जाति आधारित अत्याचार को रोकना, अपराधियों पर प्रभावी अभियोजन चलाना और पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करना।
अधिनियम मानता है कि दलित एवं आदिवासी समुदाय के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यौन हिंसा से प्रभावित SC/ST उत्तरजीवी यौन हिंसा कानूनों के अधिकारों के अतिरिक्त POA के विशेष प्रावधानों के भी हकदार है। यह खंड जमीनी स्तर पर अनुसूचित जाति अधिनियम के कार्यान्वयन एवं मौजूद उन कमियों को रेखांकित करता है जो जाति आधारित यौन हिंसा के पीड़ितों की कमजोर स्थिति को और बढ़ा देती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि धारा 4 जो इसके निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कहता है, उसमें देखा जाता है कि FIR दर्ज करवाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। साधारण FIR तो जो धाराएं हैं वो लग जाती हैं, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगवाने में एक व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और जो ये सुनिश्चित करता है, धारा 4 ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे जो पुलिस वाले हैं जो FIR नहीं करते हैं, उनका कर्तव्य सुनिश्चित करते हैं, और यदि वो नहीं करते हैं FIR तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, ऐसा कहता है। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे होता नहीं है। और कानून में भी ऐसा विशेष कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये अगर पुलिस वाला ये नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, ये नहीं है। FIR दर्ज करने में जो चुनौतियां हैं वो है, फिर है जो इसके संस्थान हैं उसके ऊपर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि चार्जशीट दाखिल करने में देरी होना, स्पॉट निरीक्षण का अभाव। तो SDM, DM या DSP जो रैंक के अधिकारी होते हैं, इसका स्थल निरीक्षण करना चाहिए FIR के बाद, लेकिन वो नहीं करते, या फिर कोई घटना हुई है उसके बाद, किंतु ऐसा होता नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा है। जो एट्रोसिटी के अंतर्गत स्थापित संस्थागत जो तंत्र में कमियां हैं, विशेष पुलिस स्टेशन POA ढांचे के अनुसार प्रत्येक जिले में विशेष SC/ST पुलिस स्टेशन होना चाहिए। जमीनी स्थिति कुछ जिलों में है स्टेशन, कुछ जिलों में ये मौजूद नहीं है। हमारे पास RTI के डेटा हैं कि कितने ज़िले में जो विशेष थाना है वो है, और जो जहाँ नहीं है उसके भी हमारे पास डिटेल है। इसका जो पुनर्वास है, मुआवजे एवं पुनर्वास से जुड़ी जो प्रणालीगत समस्याएं हैं, ये हमारे काम से ही निकल के आया है कि अधिनियम कहता है FIR दर्ज होने के 7 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में सभी मामलों में देरी देखी गई है। मुआवजे का एकमुश्त भुगतान, जो मुआवजा किस्तों में मिलना चाहिए, उसे कई बार एक बार में और देर से किया जाता है। MBC और DBMC बैठकों के इंतजार के कारण देरी। हालांकि कलेक्टर प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा जारी कर सकते हैं, परंतु कई जिलों में मुआवजा केवल DBMC बैठकों में दिया जाता है, जिससे अनावश्यक विलंब होता है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को सूचित करने हेतु एक अधिसूचना जारी करें। तो मेरे पास एक RTI का जवाब है। हमने एक RTI लगाया था कि FIR के लिए क्या जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और बिलासपुर SP ने हमें जवाब दिया था कि कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जब खुद जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए तो हमसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है। वो उसी बात का उल्लेख है। जो POA नियम 12(4) DM SDM FIR दर्ज होने पर मुआवजा देने के लिए बाध्य है, इसमें पीड़ित द्वारा जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यकता नहीं है। फिर भी कई जगह मुआवजा रोक दिया जाता है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। पीड़ित के निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले में भ्रम। यदि पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र किसी अन्य जिले में बना हो, अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि मुआवजा वहीं से मिलेगा। मृतक पीड़ितों के आश्रितों से जाति प्रमाण पत्र की मांग। हालांकि SC/ST अधिनियम के तहत आश्रितों के जाति की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि अपराध SC/ST पीड़ित के खिलाफ हुआ है। फिर भी आश्रितों से जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। एक से अधिक पीड़ित होने पर मुआवजे से इनका POA के नियम 2016 की अनुसूची कहती है, पीड़ित का मतलब सभी SC/ST व्यक्ति जिन्हें क्षति पहुंची हो। फिर भी मुआवजा केवल शिकायतकर्ता को दिया जाता है, अन्य पीड़ितों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सभी जिलों में विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएं। प्रत्येक जिले में SC/ST अत्याचारों के लिए एक अलग पुलिस स्टेशन होना अनिवार्य है। लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए तत्काल कार्यवाही, मॉडल कंटीजेंसी प्लान MCP तैयार करना और लागू करना।
पीओए अधिनियम के तहत पुनर्वास, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता, भोजन, कपड़ा, भूमि, रोजगार आदि प्रदान करने हेतु एक राज्य स्तरीय एमसीपी अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक एमसीपी नहीं बनाया गया है। धारा 15A11 के तहत पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा योजना बनाए। नियम 6 के अनुसार स्पॉट निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। हर जिले से घटना के बाद स्पॉट निरीक्षण की लिखित रिपोर्ट प्राप्त की जाए। रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले अधिकारियों पर धारा 4 के तहत कार्यवाही की जाए। ये हमारे अनुशंसा है और ये एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में है। इसके बाद मैं एक और छोटा सा हमारा PIL जो ऑनगोइंग है बिलासपुर हाई कोर्ट में, वो है सोशल बॉयकॉट, जो सामाजिक बहिष्कार रोकथाम के ऊपर। तो इसके भी हमारे कुछ रिसर्च के हैं। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी, जब मैंने जांजगीर SP को एप्लीकेशन लगाया था सोशल बॉयकॉट को लेके, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट, आज तक कोई पुलिस वाला मैं नहीं देखी जिसने इतना अच्छा रिपोर्ट बनाया हो। उन्हें पूरे जांजगीर ज़िले के एक एक थाने का एप्लीकेशन मंगाया और सबको डिटेल बना के मुझे दिया, और वो PIL में हमारा बहुत काम आया। और वैसे ही लेकिन बिलासपुर में और अदर डिस्ट्रिक्ट में हमको कहीं नहीं मिला। मतलब ऐसे रिपोर्ट तैयार करके देना। तो हमने क्या किया कि जितने FIR हैं, ऑनलाइन जो FIR हमको मिले और जितने एप्लीकेशन हमको मिले और जो पेपर कटिंग्स हैं उनको करके हमने PIL किया था। हमारे साथ में गुरु घासीदास सेवादार संघ करके संस्था है वो, और हमने इसको संयुक्त रूप से लगाया है। तो इस पे हमारी सिफारिशें हैं, यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक बहिष्कार के सभी मामलों में मौजूदा कानूनों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। हम आपका ध्यान निम्नलिखित मौजूदा कानूनी प्रावधानों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के मामलों में लागू किया जा सकता है। वर्तमान में कानून सामाजिक बहिष्कार संबंधित प्रथाओं के 3 प्रकारों को मान्यता देता है और दंडित करता है। पहला है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 7(2) व्यक्तियों के समुदाय के भीतर बहिष्कार को दंडित करती है। इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति ने अभ्यास करने से इनकार कर दिया है या इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में कोई कार्य किया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के साथ अधिनियम के उद्देश्य को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्देश्य अस्पृश्यता की प्रथा और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली सभी सामाजिक अक्षमताओं को समाप्त करना। इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी सामाजिक या धार्मिक अक्षमता को लगाने को दंडित करती है। दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) ZC समुदाय के बीच बहिष्कार से जुड़े मामलों में लागू की जा सकती है, जहां सामाजिक बहिष्कार के अधीन व्यक्ति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तीसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 383, 389, 308 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसी भी प्रकार के धन उत्वापन को दंडित करती है। सामाजिक बहिष्कार के अधिकांश मामलों में परिवार पर वित्तीय लागत लगाना शामिल है। समुदाय के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी व्यक्तियों से जुर्माना देने की अपेक्षा की जाती है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के दायरे में आता है, जो उद्वापन को किसी व्यक्ति को चोट के डर में डालकर धन देने के लिए प्रेरित करने के कार्य में परिभाषित करता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से सामाजिक बहिष्कार से जुड़ी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक हानि शामिल होगी। भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधान जिन्हें लागू किया जा सकता है उनमें धारा 120A और 120B आपराधिक षड्यंत्र, धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव, धारा 153A समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना शामिल है। एक है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 10(1) को सख्ती से लागू करना, जो सामाजिक बहिष्कार में शामिल व्यक्तियों पर सामूहिक जुर्माने को लगाने का प्रावधान करती है। तीसरा न्यायिक और पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में सामाजिक बहिष्कार और संबंधी कानूनों पर घटकों को शामिल करना। उपर्युक्त प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना। चौथा सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने वाले मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर जागरूकता फैलाने के लिए राज्य और
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से पैरालीगल स्वयंसेवकों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना। 5वां, सभी सामाजिक बहिष्कार मामलों में रोकथाम और नियंत्रण, आपराधिक कार्यवाही, पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करना। 6वां, सामाजिक बहिष्कार के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करना और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बजटीय आवंटन करना। सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को मौद्रिक मुआवजे के अलावा भूमि, शिक्षा और रोजगार जैसे गैर मौद्रिक पुनर्वास प्राप्त हो, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार के पीड़ितों को अक्सर उनके घरों से भगा दिया जाता है और उन्हें अपनी आजीविका का स्रोत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि मुआवजा चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाए। पहला, प्रथम सूचना रिपोर्ट चरण में 25%, आरोप पत्र चरण में 25% और दोष सिद्धि में 50%। 7वां है महाराष्ट्र की तरह सामाजिक बहिष्कार से निपटने के लिए एक विशेष कानून के अधिनियम पर सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन करना। 8वां, सामाजिक बहिष्कार के मामले की पहचान करने, हस्तक्षेप करने और निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन करना। इसी तरह सामाजिक बहिष्कार के मामलों में कार्यवाही की देखरेख करने, अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करना। समितियों को मासिक आधार पर बैठक करने का आदेश देना। ऐसे किसी भी समिति में संबंधित सरकारी अधिकारियों के अलावा स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत निगरानी और सतर्कता समिति के समान एक मॉडल अपनाया जा सकता है। 9वां है जिला स्तर समिति को प्रारंभिक जांच करने और जैसे ही उसे किसी अपराध की जानकारी प्राप्त हो पुनर्वास प्रदान करने का अधिकार देना, ताकि पीड़ित की आजीविका में तत्काल व्यवधानों को संबोधित किया जा सके। समिति को मौद्रिक मुआवजे के संबंध में भी यही करने का अधिकार देना। ये था हमारे 2 उद्देश्य जिसमें हम हमारे जो रिसर्च से निकल के आए हैं। और मैं मंचस्थ अतिथि और हमारे सहभागी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया और हमारी ये सिफारिश पढ़ने का समय दिया। सबको जिंदाबाद, जय भीम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं एडवोकेट शोभाराम गिलहरे। हम लोगों ने जो ज़मीनी स्तर में जो काम किए हैं उसके अनुभव के आधार पर कुछ रिपोर्ट बनाए हैं, उसको मैं पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि IJR ने बताया कि छत्तीसगढ़ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और अच्छा आगे है, तो कुछ दिक्कतें जो ज़मीनी स्तर में हैं उसको और बेहतर किया जा सकता है, सुधार करके वही कोशिश होगा इसमें। तो यौन उत्पीड़न अन्य अपराधों से संबंधित महिलाओं व उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना 2018 ये स्कीम है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2018। इसके क्रियान्वयन के लिए 2018 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी का उद्देश्य देश भर में लीगल अपराधों की पीड़ित महिलाओं को समान और एक रूप मुआवजा प्रदान करना चाहिए। हमने छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में इस योजना के अंतर्गत 35 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए हैं और अपने अनुभव के आधार पर हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA से निम्नलिखित कार्यवाही की अनुशंसा करते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA की लिए अनुशंसा है। पहला है, राज्य भर के सभी DLSA द्वारा योजना का समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। कुछ जिलों में मुआवजा के लिए आवेदन स्वीकार ही नहीं किया जाता है, वो लेना चाहिए। मुआवजे की राशि समयावधि में जिला बदलती रहती है। कुछ जिलों में आसमान टाइप का जो दिया जा रहा है वो समान रूप से मिलनी चाहिए। अंतरिम मुआवजा कई जिलों में देर से या अपूर्ण दिया जा रहा है,
वो उसमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरा है PLBs और विधिक सेवा सहायता वकीलों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 2018 योजना में शामिल किया जाए। सभी DLSA सचिव, पैनल वकील, PLBs, पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिला न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण 2018 स्कीम को शामिल करना अनिवार्य किया जाए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी पहुंचना चाहिए सब तक। तीसरा है तत्काल राहत, इमीडिएट रिलीफ का समय पर वितरण। 2018 योजना की धारा 12 के अनुसार मुआवजा आवेदन करने के तुरंत बाद पीड़ित को 5 से 10,000 रुपया एक प्री लोडेड केस कार्ड के माध्यम से दिया जाना चाहिए। तीसरा है टोनही प्रताड़ना के पीड़ितों को भी मुआवजा में शामिल किया जाए 2018 की स्कीम में। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को लैंगिक अपराधों से संबंधित मानसिक हानि झेलनी पड़ती है, वो भी मुआवजा का हकदार है। टोनही प्रताड़ना विच हंटिंग मुख्यतः महिलाओं पर होने वाले लैंगिक अपराध माना जाता है, इसलिए ऐसी पीड़िताओं को 2018 योजना में मुआवजा दिया जाना अति आवश्यक है। ये हमारा अनुभव कहता है। पांचवा है यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में सभी मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। धारा 2(1)(o) 2018 योजना के अनुसार IPC की धारा 354A, 354D, धारा 509 तथा BNS की धारा 74 से 89 के अंतर्गत आने वाली अपराध सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में शामिल है, तो इसके लिए भी विक्टिम कंपनसेशन मिलनी चाहिए। छठवां है SC/ST POA और 2018 योजना दोनों के तहत पूर्ण मुआवजा दिया जाए। 2018 योजना की धारा 4 के अनुसार मुआवजा अन्य योजनाओं से प्राप्त मुआवजे के अतिरिक्त और SC/ST POA नियम 12(4) कहता है POA के अंतर्गत मिला मुआवजा भी अन्य स्रोतों के अतिरिक्त है। यदि अपराध जाति आधारित लैंगिक हिंसा का है तो पीड़ितों को दोनों योजनाओं के तहत पीड़ित क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, जो ऐसा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस में यही है, SC/ST POA के तहत जो अपराध पंजीबद्ध होता है तो वो दिया जाता है, विक्टिम कंपनसेशन का लाभ नहीं दिया जाता। कोई भी एक स्कीम का लाभ दिया जाता है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो वो होना चाहिए। सातवां है उन पीड़िताओं के लिए बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था किया जाए जिनका खाता नहीं है। वर्तमान समस्या कई पीड़िताओं के पास बैंक खाता नहीं होने के कारण खाता खुलवाने में काफ़ी देरी होती है, जिसके कारण मुआवजा उनको समय पर नहीं मिल पाता है, तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। आठवां है सभी जिलों में एक स्थायी फंड रखा जाए। यह फंड तत्काल राहत जैसी जारी करने के लिए आवश्यक है। कई जिलों में फंड की कमी के कारण भी देरी होती है, जिला में फंड नहीं होता है, इस कारण विक्टिम कंपनसेशन लोगों पीड़िताओं को नहीं मिल पाता है, तो इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में DLSA के पास एक निर्धारित स्थायी फंड हो, जिसमें किसी भी समय मुआवजा तुरंत जारी किया जा सके। तो अगला है अंतरिम मुआवजा पूर्ण रूप से पीड़ित के खाते में जमा किया जाए। धारा 11(2) के अनुसार अंतरिम मुआवजा फिक्स डिपॉजिट में नहीं बल्कि सीधे पीड़ित के खाते में जमा होना चाहिए। अंतिम मुआवजा 25% नाबालिगों के लिए और 20% सीधे खाते में जमा करना अनिवार्य है। अंतिम मुआवजा 1 सप्ताह के भीतर दिया जाने का अवार्ड जारी किया जाना चाहिए। 7 दिन के भीतर मुआवजा पीड़ित के खाते में पहुंचना चाहिए, और ये देरी अक्टूबर 2024 से मुआवजा लगातार देरी से दिया जा रहा है, ये हमारा रिसर्च में आया है। अभी अक्टूबर 2024 से मुआवजा पीड़िता को नहीं मिल रहा है, टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, काफ़ी विलम्ब हो रहा है। मुआवजा अस्वीकार करने हेतु कारकों फैक्ट टू बी कंसिडर्ड का दुरुपयोग न हो। योजना में दिए गए कारक जैसे कि चिकित्सा है, उपचार है, शिक्षा व्यवधान है, रोजगार नुकसान है, कि मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने हैं। आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं है।
कि ये चीज़ आपके बयान में नहीं आया है इसलिए आपको ये पीड़ित क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा ऐसा कहा जाता है, तो ये आधार नहीं है, ऐसा लॉ में कहा गया है। आवेदन को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है, परंतु कई मामलों में आवेदन इसलिए अस्वीकार कर दिए जाते हैं कि पीड़िता ने इन कारकों को अपने बयान में नहीं बताया है। अंतरिम मुआवजा 60 दिन के भीतर दिया जाना अनिवार्य है। कई मामलों में डीएलए से अब तक मुआवजा नहीं देती है जब तक पीड़िता का ट्रायल बयान न दे दिया जाए। ट्रायल होता है तभी उसके बाद में पीड़ित को पीड़ित क्षतिपूर्ति दिया जाता है। पीड़िता और परिवार आरोपी के दबाव में आ जाते हैं, इससे समझौता होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। अनुसूची के अनुसार संवर्धित मुआवजा इमीडिएट कंपनसेशन सुनिश्चित किया जाए। इमीडिएट कंपनसेशन के उदाहरण का पालन राज्य भर में मानकीकृत हो, जैसे कि योजना में स्पष्ट है। बलात्कार प्लस गर्भावस्था, नाबालिग पीड़िता होने की स्थिति में गंभीर शारीरिक या मानसिक स्थिति, इन सभी श्रेणियों में मुआवजा संचयी रूप से तय किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन उसको कंबाइंड रूप से देना चाहिए, क्योंकि बलात्कार होता है तो और गर्भावस्था के दौरान बलात्कार के साथ में गर्भावस्था हो जाता है तो बलात्कार का मिलेगा, गर्भावस्था का नहीं मिलेगा। तो ये कंबाइन होना चाहिए, ये एक साथ मिलना चाहिए। और ऊपर से जो बच्चे हैं तो इनको भी 50% एक्स्ट्रा उसमें उनके साथ में जोड़कर पीड़ित क्षतिपूर्ति देना चाहिए। ये हमारा एक रिपोर्ट है और हम अनुशंसा करते हैं राज्य सरकार से ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you for sharing your invaluable experiences and insights on various aspects of access to justice. Now, to present our gratitude to the dignitaries of today's event, I humbly invite Dr. Kiran Kori to felicitate our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. V.C. Vivekanandan with a memento. To continue with the felicitation ceremony, I now invite Honorable V.C. Sir to kindly felicitate Ms. Nupur with a memento. Thank you, sir. I further request Dr. Deepak Kumar Srivastav, sir, to kindly felicitate Mr. Valay Singh with a memento. Thank you, sir. I now request Dr. Pravesh Kumar Rajput, sir, to felicitate Registrar, sir, Dr. Deepak Kumar Srivastav with a memento. In absence of Pravesh, sir, I humbly request Dr. Kaumudi Challa, ma'am, to felicitate Dr. Deepak Kumar Srivastav, sir. Thank you. As the ceremony draws to a close, I request Dr. Kiran Kori, Assistant Professor HNLU, to deliver the formal vote of thanks. Thank you, Dr. Eritrea. A pleasant good morning, one and all. I express it is my privilege and honor to propose a formal vote of thanks on this inaugural ceremony. Of Conference on Justice Delivery Mechanism and Institutional Capacity. Today marks the significant day of an innovative
visualization, collaboration, and shared purpose to protect and promote the human rights of all through justice delivery mechanisms at various fronts. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor V.C. Vivekanandan Sir, for gracing the program as chief guest, who despite his busy schedule has agreed to grace this inaugural ceremony. Your presence has truly elevated this program, sir. My heartfelt thanks and gratitude to you for always encouraging all of us. Your visionary leadership has been instrumental in shaping the future of our institution and guiding light towards excellence in all academic endeavors. I thank you for your insightful words, sir. I express my sincere thanks and gratitude to Ms. Nupur for carrying out this social work so generously and giving overview of assessing the effectiveness of justice delivery mechanisms in ensuring access to justice report. Thank you so much, ma'am. I express my deep gratitude and thanks to Mr. Wale for presenting an overview of the India Justice Report. Thank you, sir. I sincerely express my thanks to Ms. Divya, Ms. Gayatri, and Mr. Shobharam for sharing their work experiences at ground level. The work which is being undertaken by you all is praiseworthy and true motivation to all those who are willing to give their contribution and services to ensure social justice. I express my equal thanks and gratitude to Dr. Deepak Kumar Srivastava for his support and guidance. My sincere thanks to all the deans of UG and PG for their support at all fronts. I express my thanks to the program coordinator, Dr. Komedi Challa, Dr. Parvesh Rajput, for all their efforts and the team involved into it. I further express my thanks to all the participants and attendees. Your presence today is a testament to the spirit of unity and enthusiasm that drives us forward. Thank you for being part of this special day to actively deliberate upon the diverse contemporary issues, challenges, and solutions related to justice delivery mechanism. I express my deep sense of appreciation to all the faculty members, staff members, and supporting staff of HNLU for help and cooperation. I would be failing in my duty if I do not mention the whole team of CSJ and IJR for their hard work and dedication and for making this noble cause a reality and bringing hopes and satisfaction in the lives of people. As we move ahead from this inaugural moment, may the energy and inspiration continue in our deliberations, in forthcoming panel discussions for making this conference a successful and fruitful event. Thank you so much. With the kind permission of respected dignitaries on the dais, may we now bring the inaugural session to a close. I, on behalf of HNLU Raipur, sincerely thank all the dignitaries, experts, faculty members, and our participants for their valuable presence, and now look forward to the technical session and panel discussion. Please note that there will be 15 minutes tea break. For snacks and refreshments, everyone is requested to move to the atrium on this floor. The technical session and the panel discussion will commence here once the break is over. Thank you all.
has made notable progress, particularly in the state of Chhattisgarh, which has highlighted in the conference overview, has made notable progress in the domains of policing, legal aid, and the judiciary. The theme of our panel discussion is Building Justice Capacity in Chhattisgarh, Dialogue on Judiciary and Legal Aid. This conversation is both timely and significant. The India Justice Report, as well as the CSJ's study on justice delivery mechanisms, provide a composite picture of the challenges and opportunities present in the state. Today's panel brings together experts whose work spans legal aid, judicial administration, access to justice interventions, and empirical research. Their insights will contribute meaningfully to the policy and institutional discourse. I would now like to introduce the distinguished panelists who honor us with their presence today. I have the honor to introduce Mr. Valay Singh, lead India Justice Report, a published author and a core member of the India Justice Report since its inception in 2018. He works extensively with government data to evaluate justice system performance across state in India. Today, he will present findings on legal aid and judiciary from the latest IJR edition. Hearty welcome, sir. We have Ms. Medha Dev joining online. Ms. Medha Dev is the Director, Fair Trial Program, Square Circle Clinic, Nalsar, Hyderabad, a lawyer and an interventionist whose work spans gender-based violence, custodial death documentation, and access to justice systems. She has contributed to establishing and monitoring government programs supporting survivors of violence across multiple states. Hearty welcome, ma'am. We have Mr. Parth Tiwari, Deputy Secretary, Chhattisgarh State Legal Service Authority, a judicial officer appointed in 2018, presently working as Civil Judge Senior Division. He brings administrative experience from within the legal aid system of Chhattisgarh. Sir, hearty welcome. We have Ms. Shruti Naik joining online. She is the team lead, Jaldi, Vidhi Center for Legal Policy. Formerly associated with Daksh, she has worked extensively on judicial reform, gender accountability, and access to justice. Her research experience adds valuable perspective to today's deliberation. Hearty welcome, ma'am. And last but far from the least, we have Ms. Nupur, Managing Trustee, Center for Social Justice, a founding member of CSJ. She has been involved in grassroots legal empowerment across India since 1993. Her contributions have been pivotal in advancing access to justice frameworks in marginalized communities. Hearty welcome, ma'am. I am honored to introduce the moderator for this session, Professor Vishnu Konurayar, Dean Research HNLU, a respected scholar and academic leader. Professor Konurayar will guide this dialogue, ensuring that the key institutional and legal dimensions are explored meaningfully. With this, I respectfully invite
Professor Vishnu Konurayar to take the discussion forward. Sir, the stage is yours. Thank you, Dean. निवेदन है सबसे मैं दक्षिण भारत से हूँ केरला से हूँ मेरा हिंदी थोड़ा वीक है so we will start in English. So thank you the esteemed panelists and the representatives from the civil society organizations, my colleagues, students and everyone present here. Now today's theme is building justice capacity in Chhattisgarh, dialogue on judiciary and legal aid. This is a topic so close to my heart. I have been working in some of the institutions which were doing hardcore research on this, including the Indian Law Institute, which is an associate institute of the Supreme Court of India. Now, when we speak about these challenges, the building justice capacity in Chhattisgarh, dialogue on judiciary and legal aid, I would say that in the context of the special circumstances in which Chhattisgarh is situated, I would just try to identify 4 or 5 main challenges which my esteemed panelists may kindly consider. First one is the issue of accessibility. You know that Chhattisgarh is what you call a forest-rich state. The green canopy is comparatively larger than most of the other Indian states. And we have the highest number of scheduled tribes, including 7 particularly vulnerable tribal groups, the PTGS communities. And each of these tribal groups and PTGS have their own language. So what you call the issue of accessibility in terms of language, in terms of geographical isolation, this could be one of the major challenges, or this is one of the major challenges when we speak about access to justice and the legal aid in Chhattisgarh. And the second challenge that I would emphasize is the issue of cultural legitimacy. I had done my postdoctoral studies also on what they call the issue of the indigenous values. When I speak about the issue of cultural legitimacy, let me just take the example of what they call the community-based dispute resolution. This is just an example which is based on the customary laws of the tribal people. Now, when the British came into India, they had transplanted their legal system in India, the English-based legal system, which we call as common law system. Now, even after 75 years of independence, the question is how far our own people, our tribal people, our rural people, the marginalized communities in India have adapted to the transplanted alien law that we call as the English common law. They had their own customary-based legal systems, dispute resolution, governance system. There is apparently a conflict that is visible there. To what extent we have been successfully reconciling this conflict? This is another issue that I would like to emphasize. And the third is institutional coherence. What you call, when we speak about justice delivery, it is not just courts who are responsible for access to justice in India. In the morning session, Mr. Valay Singh, he identified those pillars of access to justice, which includes the courts, which includes the police, which includes prisons, which includes the other institutions, and even our Vice Chancellor was speaking about the role of national law schools in access to justice initiatives in India. Now, I have an opinion that there is no coherence, a coordination, effective coordination between these various institutions of access to justice. This is another point that I would like to place before the honorable panelist as a point from where they can start. And finally, I would also say that justice capacity is also an ethical project. It acknowledges, or it compels us to acknowledge the uncomfortable realities
which includes the systemic bias, the corruption, the invisibility of women in justice proceedings, the vulnerability that is faced by the scheduled tribes, particularly the PVTGS communities in India. These are some of the challenges that I would say, my question would be whether we are making those communities, those sections of the community part of our mission to render justice to each and every section of the individuals and groups. With this basic note, I would request the honorable panelist to come forward and speak for, since the time is limited and we are running late. I would request you to restrict your initial introduction in 8 minutes. In fact, the organizers asked me to give you 10 minutes, but please, 8 minutes. It's a sweet spot between 5 and 8. Yes. 5 and 8. Yeah. And may I invite Mr. Valay Singh? Can I stand? Of course, it's your privilege. सबको फिर से दोबारा नमस्कार, और मैं अपनी बात हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँगा। हमारी एक साथी श्रुति हैं जो जिनकी इंग्लिश हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, वो और प्रोफेसर विष्णु एक ही लेवल पे हैं मोर और लेस। तो पर मैं जिसके पहले कि मैं इन स्लाइड्स को दिखाऊं, मैं जो प्रोफेसर विवेकानंदन ने सुबह कहा था अंग्रेजी में, उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में सबके लिए समराइज करने की कोशिश करता हूँ। तो सर का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि अमूमन हम लोग कोर्ट्स को ही जिम्मेदार मान रहे हैं पूरी न्याय प्रणाली के लिए, और प्रोफेसर विष्णु ने भी वही कहा। तो हमको उस सिस्टम को सिर्फ कोर्ट तक ही नहीं लेके छोड़ना है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस की क्या क्षमता है, पुलिस की क्षमता है, फोरेंसिक की क्या क्षमता है, आईओ कितने हैं, आईओ की ट्रेनिंग कितनी है, लीगल एड लॉयर उनकी खुद की क्या ट्रेनिंग है, बजट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो उनका मोटा पॉइंट यही था कि क्या इन स्तंभों के बीच में समन्वय है, क्या उनके बीच में सहकारिता या कोऑपरेशन है। क्षमता तो ठीक है, पर क्या समन्वय भी हो रहा है। और प्रोफेसर विष्णु ने भी अभी जो कहा इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस, जिसको कि हम सिंपल शब्दों में यही कि क्या सब अपना समन्वय बना के काम करती हैं ये संस्थाएं, जिला लेवल पे, तालुक लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, या इवन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल। और आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से मैं अपना ये स्लाइड्स के जरिए डेटा शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी उन्होंने कहा ये एथिकल सवाल भी है। ये एथिकल सवाल भी है, जिसका मतलब कि मौलिक सवाल भी है कि हम लोग अगर सिस्टम को कम समझ रहे हैं, उसकी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हमें शायद हेल्प करने के लिए ये भी दिखाना होगा कि उसकी क्षमता के मुताबिक क्या सरकारों ने उसके इंतजाम किए हैं कि नहीं किए। तो वो कुछ आंकड़े इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से निकलेंगे। आप लोग फील्ड में काम करते हैं, गायत्री जी हो, दिग्गज जी हो, या जो दूसरे तीसरे भाई साहब थे लॉयर शुभा, तो उन्होंने ज़मीनी हकीकत हमें दिखाने की कोशिश करी। हमारे साथ SLSA से तिवारी सर हैं जो कि हमें उनका पर्सपेक्टिव दे। तो मैं अब छत्तीसगढ़ पे आते हुए मैं ये दिखाता हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसियों की बात करें या पदों में रिक्तियों की बात करें तो वो बढ़ गई है। 9% थी 2022 में, आज 30% है। उसकी वजह ये है कि जो स्वीकृत संख्या है या सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की, उसमें भी वृद्धि हुई है। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये रिक्ति बढ़ने का कारण, चलो हम कह सकते हैं कि
ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम ही स्वीकृत संख्या पे एक्चुअल जजेस की संख्या कम हुई है। आपने स्वीकृत संख्या बढ़ाई, अभी आपको टाइम लग रहा है, तो ये एक वजह हो सकती है। और जब आप जजेस की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारा जो अनुमान है कि एक जज पे कम से कम 8 से 10 सपोर्ट स्टाफ की जरूरत होती है, चाहे वो टाइपिस्ट हो, चाहे वो एलमन हो, चाहे वो अलग अलग तरह के उनके रोल्स होते हैं। तो सिर्फ एक जज संभव नहीं, 1+9, और आप समझ सकते हैं कि उसका वित्तीय भार छत्तीसगढ़ क्या हो, गुजरात क्या हो, हर किसी भी राज्य में बहुत बड़ा वित्तीय भार होता है। तो जब हम कहते हैं कि हमें 2000 जज और चाहिए, तो वो 2000 गुणा या इंटू 8 होगा। तो ये हमें समझना है, पर हमें इसके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं। इसी तरह से उच्च न्यायालय में वैकेंसी कम हुई, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। उच्च न्यायालय की बात हम फाइनलिस्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें। जहां तक बात रही विविधता की, तो अगर हम महिलाओं की भागीदारी तक ही सीमित रखें, तो जैसा मैं सुबह भी बता रहा था कि ये जो प्रतिशत है विमेन जजेस का जिला अदालतों में, ये देश भर में बढ़ा है पिछले 10 सालों में। ये छत्तीसगढ़ उसका एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से, कई राज्यों से अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो 45% के करीब पहुंचने वाले हैं। अब सवाल और भी उठेंगे, उनका प्रमोशन कैसे होता है, उनको किस तरह की पोजीशन मिलती हैं, उनमें से कितने उच्च न्यायालय में जाते हैं, वो सारे सवाल अपनी जगह आएंगे। लेकिन अभी शुरुआत अच्छी है, हो चुकी है शुरुआत। उसके बाद अब जो सर ने फिर से कहा, विष्णु जी ने, कि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही विविध राज्य है, कई सारे जनजातीय समूह हैं यहाँ पे, जो इनकी अपनी भाषाएं हैं, और क्या उनका समावेश हमारे समाज में, हमारे सत्ता के अलग अलग हिस्सों में कितना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल हम लोग सब जानते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो जो नेशनल ट्रेंड है कि रिक्तियाँ ज़्यादा हैं सुरक्षित पोस्ट में, वो यहाँ पर भी होल्ड करता है। 40% पद जो कि रिजर्व है फॉर एसटी, वो खाली है। अगर राष्ट्रीय एक आंकड़ा मैं आपको दूं तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 14% ही हैं हमारे राष्ट्र, नहीं 14% तो एसटी जजेस हैं। आई थिंक 2 से लेके 5% के बीच एसटी जजेस हैं इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन द कंट्री। So clearly we have a lot to do over there, because वो एकदम सीधे आपके एक्सेस टू जस्टिस पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये सिर्फ एक मोटा मोटा पिक्चर है कि एक में से 3 हाई कोर्ट जजेस की पद खाली है, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एवरेज वैकेंसी 20 से 25 के बीच में रहती है, चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य। अब आई थिंक हमारे लिए एज अ कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, ये बड़ा सवाल है कि भारत में आखिर कितने जज होना चाहिए। और इस मैटर को शायद जस्टिस सूर्यकांत ने अभी कहा भी है कि उन वैसे एनजेसी पॉलिसी को दोबारा वो उठाएंगे। उसके तहत अगर वो जजेस की क्या संख्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, वो बना लें तो बहुत अच्छी बात है। 1987 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था 50 होने चाहिए प्रति 10 लाख, आज करीब 20 के आसपास है। तो 87 में तो तब बोला था 50, और आज भी हम 20 के आसपास अटक रहे हैं। तो ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है, और इसके लिए स्टेट को संसाधन जुटाने ही चाहिए। ये सिर्फ कार्यभार बता रहा है, तो छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1000 केसेस हैं हर निचली अदालत के जज पर। ये एक औसत है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन औसतन किसी भी जज पे आप देखेंगे तो 1000 केसेस है, बहुत बड़ा केस लोड है। और जज साहब खुद तो जांच भी करेंगे, रिपोर्ट भी, तो नहीं ना जांच, तो जैसे कि सुबह विवेकानंदन सर ने कहा, जो जज साहब के सामने आएगा जज उसी हिसाब से डिसाइड करे। तो वो बाकी एजेंसीज की क्या क्षमता है वो भी देखना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट जजेस पर बहुत ज्यादा भार है पूरे देश में। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में औसतन 6000 केसेस लंबित हैं प्रति उच्च न्यायालय के जज साहब के। और छत्तीसगढ़ को ये शायद खुशी वाली बात है आप लोगों के जरिए तो, कि सिर्फ उन 4 राज्यों में से एक राज्य है जहाँ पर निचली और उच्च न्यायालय में केस क्लियर करने की दर 100% है या उससे ज्यादा। जैसे कहने का मतलब, अगर आपके 2024 में 100 केस आए तो आपने 100 निपटाए। कई सारे राज्य 100 भी नहीं निपटा पा रहे हैं, तो इसलिए उनका बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। पर
छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में वो बढ़ रहे हैं। अब केस लोड कितना है, कितना एक्चुअल होना चाहिए, वो सारी चर्चाएं अलग ही हैं। That what should be the case load, etc. Those are different matters that maybe you can or other panelists can discuss. अच्छा, ये बात भी उठती है कि केस कब माना जाए कि वो पेंडिंग है, क्या वो अगले ही दिन माना जाएगा पेंडिंग है, क्या उसे 1 साल बाद मानना चाहिए वो बैकलॉग है। तो ये परिभाषाओं का भी उलझन चलती रहती है। लेकिन ये जो आपको लेफ्ट साइड में जो ये चक्री जैसा एक ग्राफ है, उसमें वो आपको दिखा रहा है कि 5 साल से ज्यादा लंबित केसों का प्रतिशत क्या है छत्तीसगढ़ के अंदर और विभिन्न राज्यों के अंदर। तो छत्तीसगढ़ के अंदर अभी वो ऐसे 10% केसेस हैं, तो 100 में से 10% 5 साल से ज्यादा है। बाकी राज्यों में और भी ज्यादा प्रतिशत है, जैसे कि आप बिहार में देखेंगे तो वो 56% केसेस, आधे से ज्यादा केसेस 5 साल से पुराने वाले केसेस। 56% cases are pending for over 5 years in Bihar. In Kerala it is 23.6 and Tamil Nadu 26. The range is wide, but everybody is above in double digits. Right side में ये हाई कोर्ट्स के बारे में सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ क्योंकि नया हाई कोर्ट है तो वहाँ पे सिर्फ 7% ही मामले ऐसे लंबे थे। लीगल एड में छत्तीसगढ़ हमारे जमीन के काम को बताया साथियों ने, लेकिन अगर सिर्फ क्षमता की बात करें, क्योंकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्षमता पे जाती है, तो क्षमता की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे तो बहुत ही कम हुई है। सारे ही DLSAs में या जो जिला विधिक प्राधिकरण है वहाँ पे सचिव को नियुक्त कर चुके हैं। 2024 में तो शायद कोई नई वैकेंसी हो, थोड़ी बहुत पता नहीं, लेकिन 2024 के आंकड़े के हिसाब से तो 0। हालांकि जो पैरालीगल वॉलंटियर्स ने एक राष्ट्रीय ट्रेंड है कि ये 38% गिरा है पिछले 3-4 सालों में, जो IJR ने बहुत सीरियसली फ्लैग भी करा है, क्योंकि पैरालीगल वॉलंटियर्स हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर उनकी तरह है, ये समाज के लिए एक बेसिक जरूरत है। उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है हर जगह। और भी इश्यूज हैं, ट्रेन ज़्यादा होते हैं, उनको काम कम को दिया जाता है, उनका भत्ता बहुत कम है, वो सारे इश्यूज हैं, पर वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के इशू नहीं, ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, वो पूरे ही देश के इश्यूज हैं। These issues related to poor legal aid or legal aid for the poor. Whereas the diversity is concerned, it's all right, it's average 22% share of women panel lawyers, which is a bit low, given that आपके पास 45% women judges हैं, तो 22% women share lawyers क्यों हैं? And with that I should wrap, but I should say this, that ये यहाँ पर ध्यान रखिए कि राज्य खर्च बहुत कम कर रहा है लीगल एड पर, उसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है, ये राज्य को बढ़ाना पड़ेगा अपना बजट। और विक्टिम कॉम्पनसेशन के लिए छत्तीसगढ़ ने अपना 46% बजट यूज किया है, हमने IJR में लिखा है, तो बाकी राज्यों में स्थिति और भी भयानक है। थैंक यू। Yeah, statistics is always convincing, and that's what precisely he did. And may I invite Ms. Metha Dev, Director, Fair Trial Program, to speak for 8 minutes. Am I audible? Yes. Yeah. Yes. Thank you. बहुत बहुत नमस्कार सभी को, और थैंक यू ये फोरम में मुझे बुलाने के लिए। वलय जी ने जहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म किया है, मैं वहीं से पिक करना चाहूँगी कि हम अगर ऐसे सिस्टम के साथ कर रहे हैं जिसमें इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, जहाँ पे इतनी कमियाँ हैं, और उसको हम एज अ कम्युनिटी ऑफ जस्टिस वर्कर्स, इफ आई मे से, हम नेविगेट कर रहे हैं, तो sorry, is there an echo or is it fine? It's fine. We can hear you fine. Okay, okay. तो ये तो ऐसे सिस्टम के सामने जहाँ पे हर स्टेज पे बहुत वल्नरेबिलिटी है कि लोगों के हक का हनन हो, अधिकारों को प्राथमिकता नहीं दी जाए, क्योंकि हमारे अधिकारों को जो संभालने वाले हैं उनकी ही इतनी सारी परेशानियां हैं। वहाँ पे जो वकील हैं जो उनके राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। और
कहीं ना कहीं पे हमारा जो जिस कार्यक्रम में मैं काम करती हूँ, फेयर ट्रायल प्रोग्राम जो है, हमारी सोच यही है कि लीगल एड जो है वो एक बहुत बहुत अहम हिस्सा होता है किसी भी आरोपी को एक फेयर ट्रायल देने का, और इस सोच से हमने इस काम की शुरुआत की थी। मुझे जो ब्रॉड स्ट्रक्चर दिया गया है उसके मुताबिक मैं थोड़ा चर्चा करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम में जो लीगल फेलोज हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और किस प्रकार से लीगल एड से हम जुड़े हैं। तो फेयर ट्रायल प्रोग्राम जो है, एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। फेयर ट्रायल प्रोग्राम जो है, हम न्यायाधीन बंदी जो है पुणे और नागपुर प्रिजन्स में उनके केसेस लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर उनके केसेस का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो हमारी मंशा यही है कि इस प्रोसेस में जिनको लीगल रिप्रेजेंटेशन और क्रिमिनल डिफेंस की ज़रूरत है उनको वो मिलेगी, साथ साथ में हमारे एफर्ट से जो लीगल एड सिस्टम है स्टेट का वो भी स्ट्रॉन्ग हो, उसको भी मनोबल मिले, और इसलिए हमारा जो काम है वो उनको असिस्ट करने का है। तो हमने 2019 में काम किया था, शुरुआत की थी, जबकि LADCS सिस्टम जो अभी इंट्रोड्यूस हो गया है वो नहीं था, और उस समय हम पैनल एडवोकेट्स के साथ हमारे लीगल फेलोज असिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते थे। अभी LADCS शुरू हो जाने के बाद हमने इस प्रकार से अपने काम को बांटा है कि LADCS जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, जो लीगल डिफेंस करते हैं फॉर ऑल द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू लीगल एड, उनका काम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सीमित होता है। तो हमारे कार्यक्रम में जो लीगल फेलोज हैं वो उन केसेस को लेते हैं, प्राथमिकता देकर लेते हैं जो तालुका कोर्ट्स में हैं, जहाँ पे कि LADCS सिस्टम की पहुंच नहीं है। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स भी होते हैं, और आइडिया ये है कि सोशल वर्कर्स जो हैं वो लीगल फेलोज और लॉयर्स ऑन वन एंड और दूसरी तरफ पे जो आरोपी हैं उनका एक ब्रिज बनकर रहे। तो सोशल वर्कर्स डायरेक्टली प्रिजन विजिट करते हैं कम से कम हफ्ते में 2 बार, और 3 ऐसे सोशल वर्कर्स होते हैं। तो मतलब हफ्ते में हर एक दिन हमारे कार्यक्रम के एक सोशल वर्कर रहते हैं जेल के अंदर और वो केसेस लेते हैं। नाउ कमिंग टू लीगल फेलोज का रोल क्या होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि उनका काम होता है सपोर्ट और असिस्टेंस का लीगल एड ऑफिस को या लीगल एड पैनल लॉयर्स को, तो एक बहुत ही ऑब्वियस सपोर्ट है, क्योंकि हमारा काम लीगल डिफेंस का है, हम विक्टिम्स के साथ काम नहीं करते हैं। तो बेल एप्लीकेशंस फाइल करते हैं हम, और बेल एप्लीकेशन फाइल करने में इस सोच से करते हैं कि एक फॉर्मेट के तौर पे बेल एप्लीकेशन ना जाए जो किसी अक्यूज्ड की रियलिटीज़ हैं, जिस बेसिस पे उनको बेल मिल सकता है, या जो रियलिटीज़ कोर्ट के सामने लानी ज़रूरी हैं वो हम प्रस्तुत कर सकें अच्छी तरह से बेल एप्लीकेशन में। इसके साथ ही साथ जहाँ पे बेल ऑर्डर मिल गया है और उसके बावजूद कोई कंप्लायंस करके जेल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम बेल मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, कहीं पे PR बॉन्ड पे रिलीज के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। और साथ ही साथ लॉयर्स का ये भी रोल होता है कि लास्ट माइल कोऑर्डिनेशन करें, यानी कि अगर ऑर्डर निकल गया है कोर्ट से तो फिर किस तरह से उस ऑर्डर को ले जाके जेल में जमा कर सकते हैं, फिर उनकी कंप्लायंस के लिए फैमिली से कांटेक्ट करना है, पेपर वर्क करना है, उसमें सपोर्ट करें फैमिली से, क्योंकि ये जानी हुई बात है कि समाज में जो सबसे नेग्लेक्टेड वर्ग है वो ही जेल में होता है। और कई आंकड़े हैं, NCRB के अगर प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया के आंकड़े हम देखें तो बहुत क्लियर है ये बात कि जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो ही जेल में पाई जाती हैं, और उस कम्युनिटी में से भी जो लीगल एड के पास आ रहे हैं वो उसके भी अंडर क्लास होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, जिनको कोई भी और साधन मिल रहा होता है वो शायद से लीगल एड के सम्मुख नहीं आते हैं। तो उस कम्युनिटी, उस कैटेगरी, उस डेमोग्राफिक जो है उसके साथ हम काम करते हैं, तो उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा लगता है छूटने के लिए। साथ ही साथ में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हम इंट्रोड्यूस या नॉर्मलाइज करने चाह रहे हैं जो होना चाहिए आइडियल तौर पे, पर नहीं होता है।
जैसे कि मुलाकात. So कई केसेस में हमने देखा है, और ये एक मानी हुई समझ की बात है कि लीगल एड लॉयर्स मोस्टली मुलाकात नहीं लेते अपने क्लाइंट्स के साथ. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है क्लाइंट की तरफ, और इसका कई बार कारण ये होता है कि उन पे इतना वर्कलोड होता है और प्रिजन और कोर्ट में डिस्टेंस इतना होता है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो मुलाकात हमने नॉर्मलाइज किया. हमारे फेलोज रेगुलरली मुलाकात लेते हैं. स्पॉट विजिट, अगर केस की तैयारी करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो स्पॉट जहाँ पे क्राइम हुआ था उसकी विजिट करते हैं, उसके नोट्स लेते हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन में दिए गए एविडेंस के नोट्स लेते हैं ताकि आर्ग्यूमेंट्स में यूज हो पाए. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिस तरह से कि हम लॉयर्स को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं. उसके साथ साथ सोशल वर्कर्स का रोल होता है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग की चार्जशीट जो है उस पर डिस्कशन हो, ताकि जो भी वकील आरोपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको मालूम हो कि आरोपी का वर्जन क्या है ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, जो घटना घटी है उसके बारे में उनका क्या कहना है. So these are some of the things that the legal fellows do in order to ensure that there is fair representation. In terms of just reflecting on what can law schools do in terms of Miss Metha, can I come back on this after a while? The role of law schools. Sorry? Can I come back on these questions, the role of law students and law schools after a while? Because the time that has been allocated 8 minutes, it's over. If you don't mind. Sure. Yeah. I was actually given these questions, so I come back to that question. Yes. Yeah, sure. So so the other thing that we do in the program is that. Sorry, Professor Vishnu is saying that he is breaking up the questions into different rounds, and he'll take the other questions in the next round. Now he wants to go to the other speaker. Oh, yes. Sure. Yeah. Hope. Thank you for explaining my point. Now we have Mr. Parth Tiwari, the Deputy Secretary to Chhattisgarh State Legal Services Authority, and he'll be specifically speaking on legal services in Chhattisgarh. And if you can do that in 8 minutes. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. सर ने बहुत अच्छे से आउटलाइन किया है कि आज की कॉन्फ्रेंस किन पॉइंट्स पे रहेंगी. सो द फर्स्ट इशू इज एक्सेसिबिलिटी. तो बहुत बार हम लोग जो डिस्कशंस करते हैं, हमारा कई बार फोकस जो होता है दैट इज मोर ऑन जस्टिस rather than access to justice. Especially with my experience in state of Chhattisgarh, accessibility is a major issue in the sense कि बहुत सारे remote areas हैं जिसमें आज भी legal rights की वैसी awareness नहीं है. I feel कि Constitution of India is something जो हर citizen को पता होना चाहिए. It is such a beautiful document कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सो एक्सेसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 39A, सो दैट रिमेन्स अ चैलेंज, एंड विद दैट ऑब्जेक्टिव ओनली Chhattisgarh State Legal Services Authority has been established. And to initiate, I would like to highlight what our basic structure is. In the sense, जैसे वलय सर ने कहा, so basically in 23 civil districts we have 23 DLSAs, and with respect to gender ratio, at present we have 23 secretaries, जिसमें से 8 male secretaries हैं and 15, which I would say is double, is female secretaries. So हर जगह secretaries deployed हैं, not even a single district is there जहाँ secretaries नहीं हैं. Similarly, 68 तालुका लीगल सर्विस कमिटीज हैं, wherein the senior most जो जज होते हैं वहाँ पे, he is the chairman. So this is the whole structure जो पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करता है. Then
जैसा कि मैम ने भी डिस्कस किया है कि जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें पैनल लॉयर्स हैं जो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 2300 स्ट्रेंथ है पैनल लॉयर्स की. Around 400 to 500 are female lawyers and 1900 are male lawyers. उसी में से we have around 300 retainer lawyers, जिसमें ratio I would say around 40-50 are female lawyers and rest are male lawyers. Similarly, we have around 280 to 290 remand advocates. The ratio regarding male and female I would suggest is that is an overall structure in the legal system only. I see. Although in judiciary we have more and more female judges now, I would say, in lower judiciary especially. However, with respect to advocates, I would still suggest a lot needs to change in the sense in remote areas, accessibility to, like, it is not, I would say, female friendly right now for female advocates. So that is why the ratio in remand advocates, panel advocates would vary for male and females. So this is the basic thing. Then in 2022, LADCS was introduced, and LADCS has been implemented in all the districts. We have around 184 LADCS with support staff of 124 office assistant and clerks. So this is how LADCS works. As far as outreach activities are concerned, we also have certain flagship schemes which are basically directly evolved from NALSA 16 or 15 schemes that NALSA has introduced. For example, one scheme is Hamar Anna. It is specifically for women who have suffered domestic violence, and more than 30,000 people have benefited under that scheme, wherein we provide legal assistance, filing of cases through PLBs. Then as far as justice capacity is concerned, we have around 141 legal aid clinics across the state. More than 1500 PLBs are trained PLBs we have in the state of Chhattisgarh, and especially if we talk about jails. So 33 jails are there in the state of Chhattisgarh, and right now we have in total 35 jail legal aid clinics. So this is the whole structure that there is in the state of Chhattisgarh. We have 5 permanent local adalats also, which are working at the divisional level, and we have around 200 trained mediators for mediation, and total of 33 mediation centers are there. So this is how the structure is there of Chhattisgarh State Legal Services Authority, and Thank you so much, Mr. Parthivari. I'll come back with a few questions in the second round. One of the questions would be, are we emphasizing on too much on quantitative aspects, less emphasis on qualitative aspects? Yeah. Now, may I invite Ms. Shruti Naik, the team lead of JLD from the Vithi Center for Legal Policy, to cover on understanding judicial capacity and performance beyond numbers. Ma'am, if you can spend 8 minutes in the first round. Yeah, thank you. Sure. Thank you, sir. Let's request you to continue. Yes. Yes. So hello everyone, good afternoon, namaskar. As Valay mentioned, my Hindi is not very good, so I am going to be sticking to presenting in English. But essentially, what I'm going to be talking to you today about is essentially talking to you about understanding judicial capacity and looking at performance. When we speak about performance, going a little bit beyond to talk about numbers, right? So when we talk about the 3 main pillars of our governance system, of course the judiciary plays a very important role, because not only does it look at dispute resolution, but it looks at upholding and guaranteeing our legal rights, as well as acting as an oversight mechanism to any actions of the legislature and the executive, right? And the IJR essentially looks at evaluating the judiciary's capacity across 5 broad parameters, and Vala has taken us through some of this as well. And so I'm largely going to be focusing on 3 main things.
which is human resources and workload. As Mr. Tiwari also spoke about diversity within the judiciary, I think I'm going to restrain my presentation to these two. And I'm going to essentially shed a little bit of light on some other factors that we need to keep in mind when we talk about the capacity of the judiciary in enabling access to justice. And I'll also highlight some of Chhattisgarh's performances along the way in order to provide a bit of background. So first, when we talk about human resources, this is how Chhattisgarh has largely fared over the years. And I'd like to point out largely one main thing, which is that vacancies, both in terms of judicial vacancies as well as staff vacancies, play an important role in determining how efficiently the judiciary functions. And I'd like to just add one more statistic, which is a little harder to get, which is why IJR doesn't have it, which is the staff strength in district courts. And these numbers are as of 2023, which was from the Supreme Court State of the Judiciary report. And essentially, Chhattisgarh currently also has a staff vacancy of about 37%. But why essentially does all of this make a difference, right? Why should we be considering human resources so much? When we talk about the judiciary, whether we talk about timely disposal of cases or ensuring justice delivery, it's directly dependent on the capacity of a judge to be able to focus on his core role and competency, which is of adjudicating disputes. But also maximizing the capacity of judges alone is often insufficient when we talk about the judiciary as a system. And it's therefore equally important that we also consider that we need to provide them the requisite support for them to be able to carry out their functions. Now, India as a country is still largely dependent on paper-based processes in our court system, which makes it important that we also focus on the number of court staff that we have. Because the staff undertake a variety of functions, whether it be assisting with cause lists, moving files around, serving processes, providing copies of court orders. All of these are roles that still require the presence of a human element. And one of the implications of a shortage of staff is that court staff then tend to take on more than one role, which obviously will affect their efficiency in carrying out any one of these duties. And sometimes, due to a lack of court staff, what also tends to happen is that judges then have to take out time to also undertake some of these roles. For example, we know in some district courts where there is a shortage of stenographers, the judges themselves tend to handwrite orders for themselves, right? Now, of course, with the growth of technology tools in the recent past, especially AI-based voice-to-text transcription tools, we do have options where some of these roles can be better done even with the use of technology. But as Professor Vishnu pointed out, in states where there are lots of languages being used, that also means that there are lots of dialects. And our technology has not yet reached a point where we're able to capture all of these as efficiently. So as these tools take some time to develop as well, we still need that much manpower to be present in courts to really facilitate our judges in the work that they do. And which is why it's important that we prioritize human resources when we talk about the capacity of the judiciary. Now, second, when we talk about workload, as Malay also pointed out, Chhattisgarh has placed, as you can see, in amongst the best ranks for the IJR, right? But what you also need to bear in mind, and which IJR makes clear, is that these rankings are also relative to other courts in the country, which means that we need to be a little more conscious so as to not interpret being placed amongst the best ranks as necessarily not requiring much further improvement. So, for example, while 53.8% of its cases being pending for more than 3 years has placed Chhattisgarh amongst the best ranks within India, what we also need to bear in mind is what it also means in terms of other metrics of performance, right? And these are figures from NJDG as of December, so they might be slightly different from IJR's figures. But in terms of the number of cases at the High Court, which have been pending for over 10 years, we have 22% of Chhattisgarh's High Court cases pending for over 10 years, and 22% of cases pending from 5 to 10 years. Now, the implication of this for those either waiting to hear about whether they will get their title deeds and have their land or house in their name, or whether they will be acquitted or convicted of a crime, or whether they're going to be protected against discrimination and treated equally. Now, all of this cannot be overstated. And even when we look at the district courts, while Chhattisgarh does not seem to have much in terms of cases pending above 10 years, and its 5 to 10 year cases are also a small proportion, we need to bear in mind that most of its pending workload are criminal cases. And I think in this group, we don't need to emphasize that the number of people who end up staying in prison for longer than required because a case has been pending, it has severe implications for those involved. And in the context of the judiciary, what we often hear about in terms of even reporting is delays in pendency or judicial vacancies.
Now it can lead us to think, okay, maybe if we increase the number of judges, it's going to reduce the number of pending cases. But that's not necessarily true, and the numbers really show that. For example, in Rajasthan at the moment, we have about 6.8 lakh pending cases at the High Court and 39 judges. So going by this theory, if we double the number of judges to say 80 judges, that means the number of pending cases should be lower. But that's not necessarily true. For example, the High Court of Bombay has 82 judges, which is double that of Rajasthan. But in terms of its number of pending cases, it's nearly the same as Rajasthan. So there are lots of other factors that also influence workload and pendency that we really need to bear in mind. And that's why I would like to also talk about other dimensions of capacity. Judges in India handle many more forms of responsibility outside their core function of adjudication of disputes. And key amongst these are, of course, their work in committees and legal services authorities. Now, when we talk about committees, all high courts have a different number of committees and different subject matters that they oversee. Now, they largely look at various types of court administration, so computers and technology, budget and finance, sensitization, and overseeing the progress of different types of cases. So commercial dispute, child sexual offences, juvenile justice, all of these tend to have different committees. And in Chhattisgarh, for example, right now, I think the court has about 5 committees. But in many other courts, there are far more number of committees. Allahabad High Court, for example, has 77 committees. And the last time I looked closer at these numbers, it meant that there are 300 committee posts spread across over 70 to 80 judges. And these committee posts are not even equally spread out, right? There can be one judge who's on 5 committees, for example, which means that they're going to have to take time out for so many of these committee works as well. But when we talk about it, why is it a concern? For 3 main reasons. First, while some judges may have an interest in certain subject matters and also therefore grow their knowledge base, not all judges necessarily have expertise to handle some of these matters, right? When we talk about technical matters specifically, such as IT, AI, infrastructure, budgeting, all of these require some level of expertise, where our judges may not necessarily be the best place for them. Second, judges may not necessarily have enough time to constantly monitor and oversee matters, which means that sometimes things can end up going on the back burner and only come up again when something is brought to light. For example, when we talk about how our courts are supposed to look at the number of cases being filed against MPs and MLAs and monitor that. Ms. I recently checked the numbers, and only 15 of our high courts have up-to-date data that's being put out on their website. Ms. Shruti, can I make a request? Can you just conclude in the first round? I will wrap up in just a And even when a lot of these cases need to be better monitored in terms of their data as well as case management in order to ensure that we're able to make sure that cases are moving in a steady manner. Even when we look at legal services authorities, as Mr. Tiwari also mentioned, that judges are mostly on all of the positions of the legal services authorities, and very importantly too, because they do play an important role in access to justice. But on a day-to-day level, I think all of these authorities could do with better support and help in their administration. And while India did introduce the concept of court managers, there have been some problems with integrating them well into the system in order to enable them to do their carry out their work more effectively. So therefore, when we talk about judicial capacity, I think we need to think a little bit more about how judges are having to spend their time using on various aspects of court administration also, which means that it takes away some amount of time from their focusing on their core role of adjudication. Thank you. Thank you. Ma'am Nobur. जब तक ये स्लाइड हो रहा है, मैं बहुत ब्रीफ में ट्रांसलेट कर देती हूँ अभी तक जो बातचीत थी। जो श्रुति ने कहा वो बेसिकली ये था कि न्यायतंत्र की क्षमता जो है उसको केवल कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उसके साथ में जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। बहुत सारे दूसरे भी पैरामीटर्स हैं जिसके कारण न्यायतंत्र की क्षमता के ऊपर असर पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि न्यायतंत्र की भूमिका टकराव निवारण के साथ में शासन के ऊपर निगरानी रखने की भी है, और उस संदर्भ में अलग अलग तरह की एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, और कई बार वो एक्सपर्टाइज उनके पास में शायद नहीं अवेलेबल हो। तीसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा सिस्टम कागजी कार्यवाही के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है, तो उसके लिए हमें सपोर्ट स्टाफ की, कोर्ट क्लर्क्स वगैरह की भी काफ़ी हद तक ज़रूरत है, और उनकी उपलब्धि ना होने के कारण भी कानून की प्रक्रिया के ऊपर काफ़ी सारा असर पड़ सकता है। केवल जजेस ज़्यादा हो उससे न्याय की क्वालिटी के ऊपर या स्पीड के ऊपर असर पड़ेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक ये पूरा सिस्टम कार्यरत नहीं होगा तब तक में इसमें दिक्कत आने की पूरी चांसेस हैं।
बहुत ब्रीफ में मैंने कर दिया है। थोड़ा सा लीगल एड के संदर्भ में अगर हम बातचीत करें तो 1994 में हमने गुजरात हाई कोर्ट के अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में हमने 2 मॉडल लीगल एड सेंटर्स चलाए थे और उसके जो रिकमेंडेशंस थे उसको हम लोग लगातार अलग अलग समय पर सिस्टम में हम लोग पुटअप कर रहे हैं कि ये तंत्र ऐसा होना चाहिए। जो मैंने कहा नवंबर 2025 की जो मैंने रिपोर्ट देखी उसमें लग रहा है कि अभी काफ़ी चीज़ें एब्जॉर्ब की जा रही हैं, लेकिन लंबे समय तक हमें यही लग रहा था कि हम दीवार से सर मार रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर हम इसको देखें तो एक्ट जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 87 में आया था, 95 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद में बहुत सारी स्कीम्स जो है वो ईजाद की है, लेकिन वो स्कीम्स अमल कैसे होंगी उसके लिए कोई मानव संसाधन की कोई संरचना नहीं थी। जो जज थे उनके वो पार्ट टाइम चार्ज दिया गया था और उसमें वो ज़्यादा कुछ बहुत कर नहीं पाते थे। उसके बाद में 3 बहुत मुख्य चेंजेस आए जिसका फर्क पड़ा। 2009 में पैरालीगल वॉलंटियर स्कीम आई, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन फुल टाइम लीगल एड सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए और पैनल लॉयर्स जो पहले होते थे उसके एडिशन में रिटेनर लॉयर जो है वो किए गए। तो 2010 और 2011 में लीगल के लिए स्कीम लाई गई। इससे मानव संसाधन का पूरा एक तबक्का जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जो अब तक एब्सेंट था। हमारी लड़ाई शुरू से ये रही है कि फुल टाइम डेडिकेटेड लॉयर्स होने चाहिए, क्योंकि पैनल लॉयर सिस्टम बहुत वीक है और वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो रिटेनर लॉयर सिस्टम आया वो जिस तरह से हमने सोचा था या मांगा था उस तरह से नहीं आया। ये कुछ पार्ट टाइम ऑन सर्कुलेशन ऑन रोटेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नहीं है। लेकिन जो डिमांड थी कि एक डेस्क के ऊपर एक वकील बैठा हुआ होना चाहिए, वो हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर वैसा नहीं है। वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और साथ में एक पैरालीगल बैठा होता है जो उनको फ़ोन करके उनकी उपलब्धि के हिसाब से बुला लेता है। तो वो एक ड्रीम अभी भी बाकी है जिसके लिए हम अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। वो आंशिक रूप से जब LADC इंट्रोड्यूस किया गया तो लाया गया। LADC एक फुल ऑफिस है जहाँ पे आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रूम भी है, वकील भी है, पैरालीगल भी है, लेकिन उसकी मर्यादा बहुत सीमित कर दी गई। जबकि छोटे कोर्ट्स में स्पेशली अगर हम देखें तो LADC के पास में इतना काम नहीं होता है और वो इससे कई ज़्यादा काम कर सकते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितने लोग वहाँ पर हैं, वो इससे ज़्यादा वर्कलोड उठा सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा 3 नए प्रोग्राम्स आ गए हैं, जागृति, संवाद और डॉनर। इसके बारे में मैं दोबारा बातचीत करूँगी। और दिशा जो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड वो है। तो फ्रॉम ज़ीरो इतनी सारी नई चीज़ें जो है वो आई हैं, जिसमें जो मानव संसाधन को लेकर के जो बदलाव आए उसको मैं मुख्य मानती हूँ। अब थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे वार्तालाप में लैक ऑफ क्लैरिटी जो रहा है हर स्तर पर, वो एक बहुत बड़ी समस्या रही है। एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि जो मैंने नवंबर वाला डॉक्यूमेंट देखा उसमें काफ़ी हद तक ये रिजॉल्व हुआ लग रहा है, जब एक सोच है कि हमको इस सिस्टम को कैसे बनाना है। काफ़ी चीज़ें एडहॉक छुटक इधर उधर हुई हैं, लेकिन अभी एक क्लियर सोच समझ में आ रही है कि सिस्टम के अंदर एक सोच है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के तौर पर इतनी सारी स्कीम्स हैं। हमने कहा कि संवाद स्कीम है जो आदिवासियों के लिए है। एक हम और लेकर के आए वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट स्कीम। अभी संवाद स्कीम का व्यक्ति जो है क्या वो भी देखेगा, क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में ये होता है। तो फिर जो रेगुलर हमारे पैरालीगल्स हैं जो आमतौर पे 50 से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनका इनके साथ में कोई रिश्ता है या वो सेम है या वो अलग हैं, ये सारी स्पष्टताएं नहीं है। बहुत से छोटे पीसेस अलग अलग तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं। कई स्कीम्स में मुझे लगा कि हम ओवर एस्पिरेशनल हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम डॉन स्कीम की बात करें जो ड्रग एडिक्शन को लेकर के है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, आप मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कर रहे हैं, आप डी एडिक्शन काउंसलिंग कर रहे हैं, वो हमारे सिस्टम में नहीं है अभी। तो पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जो है उसको पूरा कर लें और फिर इसको थोड़ा या कोलैबोरेशन में करें। तो वो कई जगहों पे ये ओवर एस्पिरेशनल लग रहा है। जब हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम में जो मेंबर सेक्रेटरी है वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग कन्वीन करेगा, किसी कलेक्टर का कोई अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आने वाला है, ये यथार्थ हम जानते हैं। तो बहुत सारा ओवर एस्पिरेशनल चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा अपनी कॉम्पिटेंसी और मुख्य फोकस के हिसाब से ढालने की ज़रूरत है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से डेटा कलेक्ट हो रहा है। चेन्नई एक ही जगह है जहाँ से जब हम मांगते हैं तो हमारे पास में मेल, फीमेल एंड अदर्स का आता है, भले वो 0 हो बट वो उस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं।
बाकी हम मेल फीमेल रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से केसेस को अगर हम देखें जो एनेक्शंस लोगों को सबमिट कर रहे हैं, चाहे डालसा को चाहे सालसा को, उसमें भी ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है तंत्र को भी और हम लोग जैसे लोगों को भी जो स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग लेवल पे क्लैरिटी नहीं है जिसके बारे में मैं यूटीआरसी के उसमें ज़्यादा बताऊंगी, बट जैसे विक्टिम कॉम्पनसेशन भी है उसमें डालसा की मुख्य भूमिका है, लेकिन उस भूमिका की समझ जो है उसका अभाव बहुत स्पष्ट रूप से आ जाता है। बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम है। नालसा जो है वो पूरे साल का कैलेंडर तय कर देता है और उस हिसाब से डालसा को एक्ट करना होता है। अब अगर हम जैसे टापू गांव में काम कर रहे हैं, कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जो टापू हैं, उनकी ज़रूरत बिल्कुल अलग है। कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जहां बेगा आदिवासी हैं जो लॉकडाउन के पहले कभी गांव से निकले ही नहीं है, उनकी ज़रूरत बिल्कुल अलग है। तो ये जो लोकलाइजेशन होना चाहिए उसको उसका कहीं पर भी नहीं है। और यदि कोई सेंसिटिव अध्यक्ष हैं तो उनके साथ में बातचीत करके ये किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे वो ये कह देते हैं कि हमें ऊपर से बोला जाएगा तब हम नहीं उसके अलावा हम नहीं करेंगे, वहाँ पे लोकल नीड्स को एड्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो NGOs हैं उनके साथ में दो तरह के रिश्ते देखने को मिलते हैं, या तो एडवर्सरी है और सीधे बोला जाता है आप कौन है, हम आपको क्यों जवाब दें, आपके साथ क्यों कोलैबोरेट करें, और या फिर एज सेरेमोनियल कि अच्छा हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप आकर के 10 वाक्य बोल दीजिए। बट एक मिल करके काम करना जो है वो व्यक्ति आधारित है, यदि अच्छा व्यक्ति हमें मिल जाता है तो ये पॉसिबल होता है। लेकिन एज अ मैंडेट कि हमें सिविल सोसाइटी के साथ में इंगेज करना ही है, उस सोच का भी थोड़ा सा अभाव लगता है। शुरुआत से 94 से हम जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जुडिशियरी के तहत में लीगल एड नहीं होना चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसका फुल टाइम स्टाफ हो। अभी हम पैरालीगल वॉलंटियर्स को 10 दिन के लिए रखते हैं 250 रुपए के लिए। खुद की ये नवंबर वाली रिपोर्ट में लिखा है कि हम लेस देन 2% पॉपुलेशन को रीच आउट कर रहे हैं। हमारे पास लोग ही नहीं होंगे तो हम कैसे रीच आउट करेंगे। हमने आशा वर्कर की स्ट्रगल से, आंगनबाड़ी वर्कर की स्ट्रगल से सीखा और इन वॉलंटियर्स को वॉलंटियर्स ही रहे और ये कभी फुल टाइम ना बन सकें, कभी वो स्ट्रगल ही ना कर सकें, इसलिए हमने कह दिया कि 10 दिन से ज्यादा नहीं और एक जगह पे नहीं। तो रोटेशन में इन पीएडीज को अपॉइंट किया जाता है। 8 minutes sir. ओके, No, you can conclude please. I can continue? Yeah, I mean conclude. ओके, ठीक है। तो हाँ, सो बेसिकली जो है आई थिंक एक ज़रूरत जो है वो ज़रूरत ये है कि एक तंत्र को एक तंत्र के तौर पे देख करके ये पूरे जितने टुकड़े टुकड़े में पीसेस में है उसको संस्थाकीय दृष्टिकोण से और डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके एक कॉम्प्रिहेंसिव ढांचा बनाने की ज़रूरत है, जो एक परमानेंट ह्यूमन रिसोर्स जिसका हो, जो पैरालीगल्स के वॉलंटियरिज्म के ऊपर ना बेस्ड हो, जिसका खुद का एक तांत्रिक ढांचा हो। Thank you, ma'am. And now let me go to the second round of our panel discussion. And of course, the question that has been identified by the organizers have been already discussed by Mr. Valay Singh. That is, can you elaborate on the challenges for legal aid and how it can? And I guess it has been answered by different panelists. Can I ask you a different question? Now, when we speak about the effectiveness of the police in Chhattisgarh, in one IJR report it was 10, and in the next IJR report it was 2, and in the next IJR report it is placed at 9. And everything is happening in the span of 5 to 6 years. Yeah. Why such a huge fall and huge rise? So, this is a methodological answer which I will give. We have some core indicators. So and if you can answer in 3 minutes? Well, no, I'll finish in 2. Okay. We have some core indicators such as human resources. They kind of impact the overall ranking a lot. Okay. So if you have vacancy, which is also cyclical in nature, states create in 1 year, announce in next year, fill in 2 years later. So it is some of these core indicators that have a big influence on the rank. But as we always continue to emphasize, the ranking is not a reflection of any accurate reality. Yeah. It is a tool to spur a conversation on the justice system's capacity.
So to that extent, yes, you are right that this seems a bit like jumpy. Yeah. But the jump is because that, let's say you have constable vacancy, officer vacancy, then SC, ST, OBC within constable vacancy, SC, ST, OBC within officer vacancy, and similarly women's officers, women's constables. So there are about 8-9 indicators on just human resources. Then there are some linked indicators on coverage. So population per police person, population per something. So that is why when you do better in your human resources, then you are likely to do better. Okay. Yeah. So thank you. And can I go to Miss Methadev? And of course, I'm really sorry that I had restricted your intervention on the role of law students and legal professionals and law schools. So no problem. If you can speak for 2-3 minutes on that. Sure. So I was just reflecting on what measures can be taken to make law school curriculum, so to say, more in a way that it encourages more students to take up legal aid practice and clinical practice. And obviously, the more obvious suggestions are that there needs to be integration of clinical education with coursework, where there is clear guidelines on attendance, on credits, and on how the mentoring from professors will be. But I think it's very important that there is very stable anchoring and mentoring from professionals when students are taking clinical programs. So that if they are going in prison setting, if they are going in community settings, they are very clear on what is being told to them, they are clear on what they are going to execute, as well as there is that ethics of them being able to deliver services to the community they are catering to, as well as a learning curve. And then I think one very important thing for law schools to think about is what is the institutional approach they take to encourage students to take this kind of practice, which is rights-based. I always like to give this example of who are the heroes that the law school itself celebrates, who are the people who go on placement brochures. And I don't think any law school really celebrates a student who goes into trial practice and probably enrolls on a DLSA panel. The ones who are celebrated on the notice boards are people who are going for placements, law firms, and more visibly lucrative practices. So I think that institutional attitude on who is celebrated and what is celebrated is very important from the law schools. In fact, in my home state in Kerala, there is a Kerala student police system. The students, school students and the college students are trained in policing. Can we imitate the same thing in law schools? A student lawyer system? So I mean, the whole point I'm trying to make is it's not about what they do as students, but it's about what they learn as students and what they end up going into. Yeah, you are focusing on mentoring. It should not be something which is seen as a commitment that they will do as students and not take it up as professionals. Yeah, and I'm also glad that Niti Aayog is taking up a few measures on mentoring in universities. And now coming to Mr. Parthivari, I'll repeat the same question that I was asking you earlier, because the questions that has been identified by the organizers have been already answered by you. So are we going a bit more on quantity and less on qualitative aspects? Because you are focusing on numbers. Right. So that is one of the indicators of how you measure a success or a failure of any scheme or policy, right? So like with LADCS also, if we see and compare it with the system of panel lawyers that existed previously, I would suggest that if you see the results, the recruitment of LADCS is through a panel, selection committees there, which includes EDJ and judges,
and secretary, and there's a panel of 4 in the committee, selection committee. And it is through that, after that selection process only, you get a bunch of LADCs to defend the accused person, right? Yeah. And if you compare it with the panel lawyer system, the results are vastly improved. So my doubt is whether we have improved in terms of numbers. Or in quality. If you permit me, I'll just elaborate that a bit. Now, when we look at Lok Adalats and the number of cases disposed through Lok Adalats, surprisingly, you can find that there is more or less more than the number of cases that are disposed through judicial institutions. At least in the year 2008, 2004 to 2008, that was the case because I had done a World Bank project on that. Now, the issue is, when we look at the Lok Adalats, they are essentially conciliatory proceedings, right? The judges, the retired or the serving judges, when they sit as Lok Adalats, they bring their adjudicatory mechanisms in settling that dispute, not necessarily following conciliatory methods. So, that doubt, that number of cases that has been settled through Lok Adalat is highly questionable. Disagree with that, because see, the total number which we are seeing these days, it also includes pre-litigation cases, which also, and it is not restricted with the court-based litigation. Pre-litigation cases are also, they also include revenue cases, for example, or issues there, suppose loan cases are there, or cases that are pending before the banking institutions. Those are also included, firstly. And so this is the overall thing. And I would suggest that in the court-based litigation also, we definitely try to, like for example, 13th is the date for National Lok Adalat. And everything starts with number only, unless you appoint judicial officers. Now, thank you, sir. And can I request Ms. Shruti Naik? My question would be, what are the main challenges faced by the researchers and by the policymakers while working on data, judicial data, the governmental data? Because even he was also mentioning about the differences in data in different states. Thank you. Sure. So I think one of the main challenges data is the lack of clean and standardized data for us to really be able to monitor. So for example, the sort of data that's maintained even within a state across its districts tend to vary. For example, if you take bail applications, if you want to monitor how much time bail applications are taking across the state, not all district courts even have a case tag for bail applications. So how are we really going to be able to distinguish which cases belong to bail and which cases belong to other forms of criminal cases? Or even if we take in consideration civil cases, a lot of civil cases are bunched under one category of OS or original suits. But within OS, there are different types of civil cases which can all entail different forms of complexity and take different amounts of time. But unless we're able to capture data in a meaningful manner, keeping the purpose behind such data collection in mind, we're not going to really be able to solve this problem of how do we ensure case management in a steady way, or even ensure intelligent scheduling to ensure that there are fewer adjournments being taken. And even when we speak of adjournments, there's hardly any data being recorded regarding the adjournments themselves. I know in courts a lot of times it's written manually on the paper, but what's written on the paper is not really translating into data on an online system, which can really help with case management strategies. And I think that's where the challenge lies for many of us who work with data to really understand, what sort of cases are pending before courts, or how long different types of disputes are taking, or even for courts to be able to strategize any policies. It's really difficult without having the sort of data required to make these strategies. Yeah, thank you. Now, my last question to the panelists is for Nupur ma'am. Ma'am, if I request you to identify one critical gap in the access to justice system in Chhattisgarh, of course, out of many, the most critical gap, what would be that? I think lack of coordination between different stakeholders. The institutional coherence, lack of. That is one, and lack of awareness about their own responsibilities under various laws and protocols. Okay. And
Now, with the permission of all the panelists, can I go for a small third round of the panel discussion? If any of the participants have any question, you can, for 10 minutes, with the permission of Dr. Rajput and Kaumudi ma'am. यदि समूह में से किसी के भी कोई सवाल है तो हम अभी पूछ सकते हैं. Mic है? You can give. Yeah, please. Make it short. You can stand up and introduce yourself and ask the question. And if you want any specific panelist to answer that, you can tell that as well. Good afternoon, respected dignitaries, and जहाँ भी आप जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सबको स्वागत करना. मैं actually अपने आप इंट्रोडक्शन में टाइम स्पेंड नहीं लगाऊंगी. I'm Ms. B. Palushri. I'm from Government Children College. But the introduction, I guess, is enough. I want to ask a particular question, and before going to the question, I just want to set the background for it. Ma'am just have introduced here that we lack coordination and awareness. That is the core thing that is lacking. One thing is we are having expertise. मतलब हमारे पास technical expertise है. There are people who know data. There are people who are well equipped with technical details like human resource management. We have different stakeholders. We have intent also. But how do we ensure that the data, intent, and the technical expertise, coordination कैसे ensure करें, awareness कैसे हम पहुँचाएं? क्योंकि even हमारा जो institute है जहाँ से मैं अभी masters pursue कर रही हूँ. Now what happens is that we. I would request you to ask the question. Yes, yes, sir. Just 1 minute. So we have the people, okay, who we have children who really want to do things. We have teachers who want to teach. We have stakeholders who have genuine interest. But there is a lack of awareness of how to really bridge that gap. What should be the next step for them? And of course, just a minute, we lack necessary resources. We lack the time. We lack the funds. We lack we lack this gap. Like how do we ensure the coordination? I want to ask that. Thank you. Coordination of different different communities and awareness. How do we actually do this? Like, is there any, like you said about the design thinking principle, and there are a lot of things over there. But how do we actually make this happen? So as people जो हम लोग जो तंत्र का भाग नहीं है, हमारी निर्भरता उन लोगों के ऊपर है जो उस समय कुर्सी पे हैं. यदि वो अलाउ करते हैं तो हमारी स्पेस है, वरना हमारी स्पेस नहीं है. ये हकीकत है. Having said that, अच्छे ऐसे हमारी विचारधारा रखने वाले लोग कंटिन्यूअसली ढूंढते रहना और उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते रहना ताकि वो जिस भी फोरम में बोल रहे हैं वहाँ पर वो हमारी बात लेकर के जा सकें. वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि कानून आ जाता है उससे कोई महत्व नहीं रहता है. लेकिन आप डीएसपी से आप लेटर लिखवा लीजिए तो वो हर पुलिस थाने में बोलेगा, और अगर आप जुडिशियल प्रोटोकॉल रजिस्ट्रार से निकलवा लीजिए तो वो हर कोर्ट में बोलेगा. तो आप पीडब्ल्यूडी में लेकर के जाइए और बोलिए कि आपको 60 दिन में करना है या 3 दिन में नोटिस देनी है. डिस्पाइट कि वो कानून में काले अक्षरों में लिखा हुआ है नहीं होता है, लेकिन जुडिशियल प्रोटोकॉल लाने से वो हो जाता है. तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ेगी कि कौन किसकी सुनता है, किस भाषा में सुनता है. Ma'am, if you can restrict the follow-up question. Just so one. Make it quick, really quick, okay. please. Ma'am, क्या हम एक particular center सिर्फ इस चीज़ के dedicated कर सकते हैं, which is just for management and coordination of these different programs, different schemes वगैरह. So that's it. मैं इस चीज़ को नहीं कल्पना कर पा रही हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को देखें, उसमें कोर्ट की भी भूमिका है, उसमें डीएलएसए की भी भूमिका है, उसमें पुलिस की भी भूमिका है. ये तीन को आपस में बातचीत करनी है. तो कोई भी बाहरी संस्था जो है वो ये बातचीत नहीं करा सकती है. आपने सेल बना दिया, लेकिन वो सेल इन तीन का जब तक आपस में रिश्ता नहीं बनेगा तब तक में वो सेल शायद स्पेस क्रिएट कर सकता है या मीटिंग बुला सकता है, बट वो हमारी पहुंच लिमिटेड है. हाँ, जैसे HNLU जैसी बॉडीज हैं जिनके गवर्नमेंट में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो अगर इस तरह से कन्वीन करती हैं, बट वो मतलब सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि बहुत अधिकारी आधारित है. वो अधिकारी को इंटरेस्ट होगा तो वो आएंगे, नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे.
Please, I can ask the question. सर सवाल से ज़्यादा निवेदन है कि DLSS मैम लेकिन जो भी है जल्दी करना। जी DLSS सेक्रेटरीज जो है वो विक्टिम कंपनसेशन जो राशि है वो बहुत डिले मतलब मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन देना था आपको, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन में आया कि 46% ही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जहाँ तक विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम का है वो है, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। देयर इज नो सेपरेट फंड जिससे हम लोग उसको फंड कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट की इंटरिम रिलीफ में भी वी डोंट हैव फंड्स, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। एंड अगर मैं आपसे डेटा शेयर करूँ, ठीक है, तो 2023-24 में फ्रॉम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वी हैव डिस्बर्स्ड 27 crores to in victim compensation scheme, and then we go from 2024 to 25, we have disbursed 39 crores, and till September I'm telling you it's 40 crores, and for the next financial year in this 6 months we already have given a demand of 53 crores. One more question. तो मेरे बस्तर के साथी नहीं है इसलिए हम बिहाफ आप मैं पूछ रही हूँ, आपका कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो जैसे बिलासपुर में 2011 में हम काम स्टार्ट किए वैसी था, सेम कंडीशन अभी वहाँ पे है, तो उसको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये मेरा निवेदन ही है आपसे कि वहाँ भी पैरालीगल ट्रेनिंग, पैरालीगल नियुक्तियाँ ये आप करिए वहाँ। Actually, regarding PLVs, there was a letter issued by NALSA only. That, yes. So subsequent to that, there has been reduction. So that's the main reason. Sir, yeah, you need not respond to that. She is just and if you are not comfortable. Yeah. Is there any other intervention? A quick question. So, if you have any last minute. So I would rather ask our Meena and Shruti if they have any last reflection, because they could not join us Indigo की वजह से ये नहीं आ पाए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की उपभोक्ता फोरम्स के ऊपर फरवरी में एक रिपोर्ट लॉन्च होगी, उसमें आपको उसकी भी हकीकत पता चलेगी। मेरा और श्रुति, Miss Shruti or Miss Mehta, if you have any last minute observation. Can I go first? Yeah. 1 minute, please. Yeah. No, so I just want to say that हमने फेडरल प्रोग्राम में जितना काम किया है उससे हमने जो सीखा है उससे पॉजिटिव लर्निंग बस यही है कि अगर लीगल एड लॉयर्स या जो ग्रास रूट के लॉयर्स हैं और PLVs मिल के काम करें तो कई सारी सिस्टम की सारी लिमिटेशंस के बावजूद हम छोटी छोटी कई सारी बैटल्स को जीतते हैं। और वो हमारा काम जो है वो इन बहुत छोटी छोटी चीज़ों में दिखता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जब हम 3 साल से काम करते हैं और 2021 में इन रे बेल पॉलिसी का जो केस कोर्ट के सामने आया था उसमें हमने ये बताया था कोर्ट को और प्रयास ने मिलकर ये कहा था कि जेल्स को मालूम नहीं होता है कब बेल ऑर्डर पास हो रहा है और इस वजह से जब कोर्ट्स कभी भी सर्वे करते हैं तो वो एक्यूरेट डेटा नहीं आता है। और उस एक सजेशन के बेसिस पे कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास किया कि हर कोर्ट ऑर्डर अभी बेल ऑर्डर ईमेल होगा जेल्स को। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में हमारी विक्ट्री है और इन बहुत छोटी छोटी डिटेल्स से कई लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। सो आई वुड जस्ट यूज दैट एज लाइक अ क्लोजिंग रिमार्क कि बहुत पोटेंशियल है हमारे काम में। Thank you. Yes, ma'am. एक बहुत बड़ी चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि क्योंकि हमारे जो फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरीज हैं वो जुडिशरी से ही आ रहे हैं तो उनका जज के तौर पे रोल और इस रोल में जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल अलग है। ये एक लोक संपर्क का रोल है जिसमें उनको आउट ऑफ द वे जाके लोगों से मिलना है और जो जुडिशरी में उनको सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और कई बार वो डिफरेंस ऑफ कैप नहीं समझ पाते हैं जिसकी वजह से भी काफ़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो वो भी एक चीज़ है। Yeah, Miss Shruti, any closing remark?
Yes, just one last thing. I just wanted to thank the organizers for accommodating us online as well as holding this conversation, because I think the only way forward is for all of us to push for all of these reforms to collective, because there's so many areas for improvement that we need to do in this conversation alone, and I look forward to working with everyone in the future as well. So thank you very much. Yeah, thank you. Tiwari sir, if you have anything closing. I would like to just thank for giving such a wonderful platform for everyone, and especially for CG Salsa to present our views also and to get some feedbacks also. So that's it. Thank you. Yes, sir. That is what we call as democracy. हमारा नाम मेरा ही सजेस्ट किया हुआ था, इसे डीबीपी पे आई लगाई। उसके बाद एक बैठक हुई थी जिसमें तिवारी साहब थे, विवेक तिवारी साहब। तो मैंने इसलिए सजेस्ट किया था सर कि हमार का मतलब होता है एक महिला भी आती है, उसका पति भी आता है, बच्चे जो मतलब वायलेंस कर रहा है वो भी आता है, सबको लेकर हम चले करते हमारा। Thank you very much, sir, for steering an insightful and enriching discussion. I take this opportunity to extend my deep appreciation to all distinguished panelists for their thoughtful presentations, data-grounded reflections, and illuminating perspectives on strengthening legal aid and judicial capacity in Chhattisgarh. We now proceed to a brief presentation of mementos as a token of our gratitude. May I request Professor Pankaj Umarkar sir to felicitate Mr. Valay Singh with a memento. Sir, yeah, sir, Pankaj sir, आप इधर आइए. May I request Das sir, Deepak Das sir, to felicitate Mr. Parth Tiwari with a memento. I would like to call upon Dr. Avinash Thamal sir to felicitate Ms. Nupur with a memento. Ma'am. Ms. Nupur. Yes, please. Thank you, sir. And now may I request Dr. Parvesh Rajput sir to kindly present the memento to our moderator, Professor Vishnu Kornurayar. We are part of the same team. So thank you, sir. Thank you. So, ladies and gentlemen, this brings us to the close of the panel discussion on judiciary and legal aid. Thank you for your attention and active engagement. We look forward to the sessions that follow and the continued exchange of ideas that this conference aspires to foster. A good lunch is waiting you. So have a good appetite. Thank you very much. We meet at 2:30. Please join for lunch.